So all of you kindly join the WhatsApp group link. And if somebody is unable to join, I am also dropping down my number. You can reach out to me on WhatsApp. Just your name and course name would help, and I would share you the invite. Okay, so your mentor is joining in a minute. And till then, let's have some basic introduction. Let's get to know one another, because we are going to meet at this platform for another 2 days, right? So I'll start with Bhavita. Hi, Bhavita. Can we have your introduction, please? Yeah, hi, I'm Bhavita from Mumbai, and I'm an entrepreneur and I love crystals. So I'm not very beginner for crystal healing or like to the world of crystal. I have been practicing and working with crystals since past 2 years. But whenever Amazing. crystal workshop or anything shows up, then I'm like always curious to know that how and what other people are using crystals and how like they're practicing with crystals. So it is just out of curiosity. Yeah, so we have one of the amazing mentor also, Krishna sir. He is having 7 years of experience and he's trained a lot of people online. So I think this platform is really going to give you a lot of learning today and tomorrow as well, right? Hi, Hitesh. Can we have your introduction, please? Hi, my name is Hitesh and I'm from Bangalore. I'm Hi, Hitesh. basically, Even BitClass is from Bangalore. uh, so I'm a freelance digital marketer and also a part-time shloka teacher. Okay, so how did you develop your interest Welcome. towards crystals? Are you fascinated with crystals and all? I've been practicing with crystals from past 2 years, and I'm still like progressing into it. Okay, okay. So, hi, Krishna sir. I see you there. Krishna sir. Hi, Light Beans. Hello, everyone. I see a lot of Hi. people filled with a lot of enthusiasm. Yes. Krishna sir, if you And could make me the host quickly, and I'll look after the class, and then we can start with the session. sure. So guys, I think you have already seen your mentor. He is one of the experienced and best mentors that you are going to have. And I'm hoping that you guys will learn a lot of things in this 2 days. And yes, even going forward too. So everyone is excited. Yes, yes, yes. In the chat box, right? This is the early evening. Let's show some energy. I can see all the beautiful faces here, but I want full energy in the session. And then Krishna sir is addressing you guys and starting with the session soon. It's already 7:02, right? Yeah, we've got 88 participants already, I guess. So we can probably start another 2 minutes, 5 minutes, right? Yes. Till I then, hope sir, this would is you like to have introduction with everyone? yes. I heard introduction from Bhavita and Hitesh. Anyone else? If I could see your cameras, videos, if you could all of you could switch them on. Lippy, would you like to introduce yourself? I see you smiling from that time. It's really great to have all the energetic people here. Hi, Lippy. Hello, sir. Hi. Hi, Vicky this side. Hi, Vicky. So what got you interested towards the crystal world? Are you using any of the crystals, or this is your first time? No, this is my second time. मैंने इससे पहले अभी जस्ट ही क्लास ली थी एक अच्छा. अपना ग्रुप चला था व्हाट्सएप पे रैकी इंडिया फाउंडेशन के नाम से राइट. हाँ तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं
तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर में, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकली तो कुछ हो नहीं रहा, सारा मतलब खाली कंप्यूटराइज ही हो रहा है. But practically you for everyone, you know what, nowadays I know everybody is locked up in the house, you know, so practical things are not really being possible. But the plus point is you have at least 4 or 5 people whom you can practice at home, including yourself. Yes. You know, today this being a Zoom, it is like an outing for all of us because we are connected from different parts of India. So let's hope we enjoy and learn and, you know, get to know about the crystal world, the fascinating world of crystals. Okay. Yeah. So let me start the screen sharing so you guys can, you know, see what we've got in store for you today. I hope you guys can see the screen that I've shared. Just a Yes, very brief absolutely. intro about myself. You know, I'm from a business family. You know, been into a lot of Hi, businesses. sorry. Just want to interject. We can see the screen, but some of us, I believe, are on phones. So if you could just zoom into the text at the bottom right corner. Right. Yeah, if you could just make it a little bit bigger. So thank Is you. it Thanks a lot. is it better now? Yeah, Yes, it is. yes. Thanks a lot. Great. So and you guys should keep it interactive, yeah. So that, you know, we all can enjoy. People have also started having fun over the PPT as well. Yeah, I just saw. कोई बात नहीं, you can have fun, not an issue. चलो Yeah. sir, we'll continue. So yeah, hi guys again. You know, I guess now we've got almost full room. So people who joined now, hi. Please keep it interactive. And a brief intro about myself. You know, I'll be telling you about the fascinating world about crystals today. You know, I'm from a business family background, been into a lot of businesses, real estate and others, and then, you know, been into creating a lot of companies for my friends or you know, people I knew. You know, like I've been the VP for certain companies for sales and training and marketing. You know, including hiring say around 300 people and training them for sales. So, you know, everything is sales in the world. You know, even today what we're doing is part of sales. You know, we're trying to teach you something. So yeah, around say 7 years back, I was introduced to these crystals, and it was like fish to water. So since then, you know, I've been selling almost all type of crystals, gemstones, you know, all the varieties, and I'm into crystal healing, aura healing, pranic healing, reiki healing, numerology, astrology, and a bit of family counseling as well, which obviously comes, you know, along with all of these things. And I've founded an energy healing technique, a new modality, which I have named as GPET, which is God's positive healing, you know, energy healing technique. Yeah, that's you know, most everything about my portfolio. And I just love crystals. You know, since the day I have seen them, I think my house is just filled with them. My office, my house, my car. So who all over here, you know, knows about other forms of healing like crystal healing, aura, pranic, reiki? Is there anyone here who's into any type of occult healing? Gitanjali, I see your hand. Yes, in the chat box. Every one of you can answer in the chat box, and we'll read it out. Okay, Bhavita, you can unmute yourself. I see a lot of raised hands. Yeah, I have learned basic Usoi Reiki as well as quantum Reiki. I also practice tarot card and I'm currently learning oracle cards. I know pranic healing, like I have learned, but I have never practiced because I don't know. Somehow I felt with Reiki, my connection, my intuition was much stronger than pranic healing. I couldn't connect to it. So I have been practicing Reiki since 2 years now, but I know about pranic healing, and obviously numerology and astrology here bits and pieces comes with the tarot card and like all the spiritual stuff. Right. You're at the right place because, you know, all the crystals go very well with all of these modalities that you're practicing. So that is the reason why, you know, I was asking. So Gitanjali ji, you have something to say? I see you nodding.
Can we just unmute Gitanjali ji? Even I don't know how to unmute. Nikki, are you doing it? Hello? I'm not able to Yes, hear sir. any of I'm the. here. I'm here now, sir. Earlier, I was not able to unmute. Yes. Yeah. Yeah. Hi, Gitanjali. Hi, sir. Sir, I have been, I'm a batch flower therapist, and plus, I have done recently tarot and numerology, and I've learned the importance of crystals. And my joining, and I can see a big role, because I have seen people using crystals, especially in numerology and tarot, and even, charging your cards with crystals and everything. Yes. Yeah. So, I mean, I really want to go deep into Right. it. So that's I what was expecting a lot exactly. of people into occult today. So, Okay, great. So I'm looking forward for this workshop. great. Okay, Molly also has something to share. Molly, you can unmute. Yeah, hi. I'm basically an architect interior designer, but recently I have I have practicing tarot card reading and numerology. So that's how like crystal के लिए वो थोड़ा सा जानने के लिए मेरा थोड़ा सा वो curiosity था. That is why I joined this, and yeah, I'm looking forward it. Great, Molly. So welcome to the crystal class. Any guy would like to just let us know about their journey if they're into anything related to occult. I see a healthy mix. I see a lot of guys as well, which is a good thing. Usually, it's always more females. So any of you guys, you want to raise your hand and give us your one. Nitin, you can unmute. Nitin, you can unmute. Hi everyone. Hello, sir. Hi, Nitin. Actually, I'm a banker by profession, but from last year, due to lockdown happened, so I learned tarot card reading, and till now I'm doing well with tarot because I have started my page on Instagram and I'm doing tarot reading. So Great. and I'm into crystal as well. From last one month, I guess I'm keep on buying crystals. I don't know why. I'm just so much attracted towards that. Great. Yeah, this is exactly what happens with the crystals. Usually I say that you don't choose crystals; the crystals choose you. Chooses And you, yes. when I do a lot of exhibitions, I suggest people the crystals with numerology or astro or other things. But in the end, I say pick whatever you like. All right, so let's begin the class. Let us give an intro about what we will be learning today, tomorrow, and just a brief about this. So I'm sure everybody had seen the brochure. Otherwise, so we'll just give you a brief healing, crystal healing, brief instructions. Brief training about it, how the crystal works. There are 8 to 10 popular crystals, jo ki matlab anybody who gets into crystal healing, or even if a person who just starts to like the crystals, they usually end up seeing these 8 to 10 crystals, which are called the core crystals. So we'll be introducing those crystals and all of these crystals ka usages also. Today I'll be giving you certain usages today, and tomorrow we'll give you certain bonus usages, or I'll also be giving you for tomorrow. I'm already, trying to build up the momentum for tomorrow, that there'll be 3 to 4 crystals which I'll introduce, which a lot of people don't know that these come into the category of crystals. One, and I'll be, introducing you guys with certain ways of using the crystals, which usually people are not aware of. So yeah, so we'll take it further from here, right? So obviously, I see a lot of people, who are healers already here, or who are interested into the spiritual occult world. So so it's already here. You're a healer, spiritual instructor, Reiki practitioner. So this will be helping you to add crystals to your, services or what you're already doing,
irrespective of the fact that you're doing it for others, or you can do it for yourself as well, or just add these beautiful crystals in your household, in your lifestyle, to get that positive energy, to get that positive vibes, and how many of you, anybody knows like what exactly are these crystals? Like क्या है यार, ये पत्थर है, शीशा है, what exactly are these crystals? Anybody raising their hands? Nitin? I think So Nitin, we can look over the chat. We can look over the chat. Okay. Hi sir. So जितना मुझे पता है, it's like a on a fourth stage, like it's a strongest, जैसे हम diamond को बोलते हैं ना कि वो strongest है, ये fourth number पे आता है. It's also a very strongest metal, I would say. Can't hear you, so I can't hear you. So let me just tell you, see, what happens that within the earth, deep inside the earth, depending upon the layers and how deep it is, these crystals are formed naturally. They can't be made they can't be man-made unless they're fake or something, but otherwise they are made naturally by different temperatures and different you can say chemicals or different natural products mixing in the earth. Or usually what happens is that अगर आपने सबसे ज़्यादा एक crystal आप सबने देखा होगा, which is this is called spatic. Can you see? This is called white quartz. This you all must have seen mostly with panditjis and somewhere someone elder in the house, like somebody must be wearing it in the neck. Somebody Sir, say mala. Sir, if you could stop sharing the screen, you would be on spotlight then. Oh, just give me a second. Hmm. Pause share. Okay. So am I visible now? Sir, stop sharing it. Yes. Yeah, now you're completely visible. So everybody would have seen these, somewhere somebody doing mala jap or somebody wearing it in the neck. So just to give you an idea, because there's a lot of confusion and myths, when any crystal is formed in the, inside earth, in the core of the earth, any crystal, there might be 500 type of crystal. The first crystal that is ever formed is called white quartz or spatic. This is the first crystal ever that is formed. With the same crystal, that with the natural process of Mother Earth, this same crystal will then be there in the core of the earth for another few hundreds of years or thousands of years, and then slowly it will convert naturally into other forms of crystal, like amethyst or purple color, black color, red color. So this is the main crystal. Like if anybody ever says कि ये crystal की कोई आपको बोलता है माला ले लो या पंडित जी बोलते हैं, so it is white quartz always. Anywhere in the world, the first crystal that is ever formed in the Mother Earth is called white quartz. So this is like an all-rounder crystal. Even if you are a crystal healer and you don't know about 500 crystals available throughout the world, or there are certain meteoroids also like tektite which have fallen on earth and are used as crystals, this crystal is self-sufficient in itself, because this crystal has the color of all the crystals available. This is white, so which means that it has got the combination of Vibgyor, which means all the colors available of rainbow. So इसी के बाद आगे जाके दूसरे crystals naturally develop होते हैं. So why I am putting a lot of emphasis on this is that people who don't have a lot of crystals, या लॉकडाउन में आप लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, या आपको कल को आगे जाके आपके पास कभी और कोई क्रिस्टल नहीं होता है अपने पर्सनल यूज के लिए भी. So this one crystal is almost equivalent to every other crystal, depending upon which chakra or where you want to use it or how you want to use it, because it will be giving out the energies of every other crystal available on earth, right? So let me again go on the screen sharing and share some other content. Sir, how would we know that these crystals are genuine?
these crystals are real, how to identify the real crystals? Yes, I would be, though I would be coming to this also, but let me give you an idea. See, in the initial stages, just as a normal user, you will not be able to know. Unless you are into energy healing or you're able to judge the aura of the crystals, there is no other way to get to know that these are real or not. But there are certain certifications that are available for 100 rupees to 100 rupees, depending upon how big the crystal is, just to get the authenticity. Nowadays, usually almost every seller for certain big crystals, they give you a certificate along with that. So unless until you have you are an energy healer, or you have those machines which when you scan these crystals with those handheld machines, they give you the reading of the the energy field. So there's actually 3 ways of knowing it, right? If somebody is not able to speak, you can write down in the chat window. So yeah, white quartz and clear quartz is the same, and just keep your questions handy. So it's best that we take it all together for everyone at the end, right? Now I've given you just a very brief idea of how a crystal is formed, and then how different crystals are formed from these. Now the next question is that how to use these crystals and what is the usage, right? So I would consider that almost every one of you know that there are chakras in our body. Yes, 7 chakras. There are. Yes, so yeah, somebody just answered it themselves. Otherwise, if you would have seen here, I was giving away some brownie points for someone who was going to exactly tell me how many chakras are there on the body. See, actually there are unlimited chakras. Yeah, yes, Neelam ji, I think now you've got the brownie points. Neelam ji, I think आपने सबसे पहले लिखा है 114 chakras. So that is true. We've got 114 chakras in our entire body. Everywhere you would see your body or touch, you would have some small or large chakra. But we primarily talk about 7 chakras because these are the main chakras. If we are able to balance these chakras or manage these chakras, then every other chakra will work accordingly. So crystals, we'll get to know about the crystals. We like them, we love them, they look very nice. So we try to use them in different forms. But how do we use it and why do we use it? One is because अच्छे लगते हैं, color अच्छा है, इनमें बहुत designs आते हैं, which I'll be sharing with you after some time. So yeah, so we've got these chakras. So these crystals are used primarily on the chakras, and we have a lot of crystals. The main core crystals are around 7 to 10. Otherwise, we have more than 500 crystals. Usage unka same rahega. Every crystal, there's one more plus point in every crystal. Every crystal has 7 to 10 uses. स्पार्टेक का जो यूज है वही सेम यूज शायद एक और क्रिस्टल का भी होगा, बट उसका अपना 10 से 12 यूजेस और भी होता है. So that you get to know, once you start using the crystals, then you read about them, you read on books, or you take trainings, or you come into the advanced crystal healing session that we'll be doing after these 2 days. Yes, Puneet ji, you're writing right. Black obsidian quartz, agate, labradorite, Manjot ji, rose quartz. So yeah, these are one of the core crystals. So once we go into the higher level of understanding about the crystals in the advanced level course, उसमें आपको हर crystal का maximum number of usages पता लगता है, and how to give somebody a crystal, because otherwise there is so much of variety of crystals that everybody can't keep all the crystals, or they cannot just fill it up. कि उनको actually जो उस वक्त use है या जो सुंदर लग रहा है पसंद कर रहे हैं वो उसको they can use कर सकते हैं. So next I'll be opening a chakra guide. I'd like to ask here, how many of you know this? We all have studied it in school, right? So let us refresh, because आजकल हमारे बच्चा लोग भी घर पे ही कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ ही पढ़ रहे हैं. So how many of you remember this this word called Vibgyor?
Vibgyor. I think it's everyone, sir. But I want to know if somebody actually remembers. This is like a blast from the past, Rainbow Yes. So colors. yeah. Yes. So V is for violet. I is for indigo. B is for blue. G is for green. Yellow is Y is for yellow, orange, and red. Right? So it's very easy to remember. अगर वैसे लोगों को चक्रास याद नहीं रहते हैं, because there are so many different names in Hindi. There are few different names in English as well. So the simplest way to remember all chakras is, if you remember Vibgyor, so you start from your crown. I call this the top of your head. So you start from your top of your head, which is the crown chakra. So that is purple because Vibgyor is V is purple, right? Then the third eye chakra. I hope everybody knows, अगर किसी को नहीं पता तो वो chat window में लिख सकते हैं, because if this is news to you, for the first time you're hearing that this is called the third eye chakra, then let me know so I can, give more information about it. Right? So crown chakra, violet color. Third eye chakra, blue color. Snehal, you didn't know. Okay, just follow up. You'll get to know. Throat. This is the throat. This is called the throat chakra, blue chakra. Heart chakra. Now everybody, I think, usually will think that the heart chakra or the color of the energy in the heart chakra would be pink, right? I think everybody would consider it to be a pink or a red heart or a pink energy or something, but it is actually green. When we check the energy color of the chakra of heart, it is green, and it is not right here. It is more in the center. We're talking about chakras, right? The heart chakra. And then we go down towards our stomach, solar chakra. Then we go a little below towards our navel. That is the sacral chakra, orange. And then root chakra is the base chakra. It's also called the sex chakra because root chakra is the main chakra of our entire body. अगर हमारे सारे chakras balanced होंगे life में, because of meditations or because of good physical activity or positive frame of mind, still if the root chakra is not balanced or it is overpowered also, then all the chakras, rest of the 6 chakras will not function properly. So if tomorrow you are facing any issue or somebody comes to you for crystal healing or any other purpose, chakra healing, so the root chakra, the base chakra is the main chakra, because if you power this chakra, you will get energy, you will get a lot of positivity, activity, and all the other chakras are also balanced through that. There is another way of balancing the chakras through the crown chakra, but the best and the easiest, fastest is through root. So yes, keep on adding your inputs to the chat window, because I am really loving the interaction you guys are doing, and I hope the person who's doing most interaction also gets the brownie points for tomorrow, right? So yeah, keep typing. So this is the a brief about the chakras that I've already told you. So if you could zoom a little, then it would be convenient for everyone then. Just give me a second. Trying to zoom. Will it be good now? Yes. Right. So after I showed you just a brief idea with the color chart of all the chakras, now next, I'm just giving you a little more detail about the chakras itself. Like I told you, first chakra is the base, root. I'm telling for people who are not aware at all. I believe a lot of people are aware already, being into the occult science world. But for a lot of people who are, actually first timers, so this is because this is the basic, introduction class. So I'm taking it accordingly. This is the base chakra, first chakra, base at the root chakra, and this chakra is responsible for stability, grounding,
There are a lot of crystals associated with it, which we would come later on, or maybe we will continue the crystals part tomorrow for the chakra, specifically for the chakra. Second is the sacral below the navel. This is the color of the chakra. When you see the chakra color through scanning, this is the color. Solar plexus below, the breastbone, heart chakra. Throat chakra is at the Adam's apple. This is blue in color. Third eye chakra, it is also called the bro chakra, or when I'm doing classes, I say, between the eyebrows. So third eye chakra. Crown chakra is the head. This is this is the chakra from where you usually receive energy when somebody is healing you or when you're doing meditation. Right? So let's talk about the basic type of crystals, the 7 to 10 type of crystals, which almost everybody would know or should know, right? Let me check the videos for everyone. Just give me a second. Yeah, now I can see you guys. So amethyst is the purple colored crystal, which I'll just try to show you. I do have a few crystals with me here. Because of the lockdown, I'm away from my office, so I don't have all the big crystals. I have small crystals. So can everyone see this? And if any one of you have an amethyst with you, you can also show it to the camera. I think the crystal is visible. Yes, sir. We can even post it in the WhatsApp group. Yes, that I would do, but I'll do a detailed class or a detailed video imaging with the screenshots on the laptop for each crystal tomorrow. That'll be taken up tomorrow, so we can probably share it after the tomorrow's class. So this is amethyst. Poromita, I see you have an amethyst, right? So I'm really liking it, and it's really nice color. So good that you have a nice amethyst. I'm really happy. So just giving you basic introduction, this is to activate your crown chakra and also helps in the third eye chakra. So this is the color of the aura also, color of these chakras. So this is a very good protective stone. These are the core stones. So anybody who is into any type of healing or is just starting to collect crystals for themselves, this is the main chakra, and this is main crystal. This crystal is very effective for any type of ailments, any type of disease, including any type of addiction of alcohol. Even cancer patients have been documented to be better in health, or per se recovered by using this in a lot of ways. There is a lot of ways through which this can be used. So the next crystal is selenite. It is basically a clearing crystal. It's a clearing crystal for almost all the crystal. It clears all the crystals otherwise. This is a citrine. This is a yellowish in color, citrine crystal. And this is used to balance the energy of the chakras, activate and open the navel chakra, the solar plexus chakra. It energizes and even stimulates the crown chakra. There is one more thing about all the crystals. They all have different uses, but there are many common usages. So like I told you, amethyst is for the crown and the third eye. Even citrine is for the crown as well. So for every chakra, you will have 2 or 3 corresponding chakras, and for one chakra you will probably have 8-10 crystals as well. But we are right now doing the core main crystals, which everybody must have. Amber is another crystal which I'll be showing the pictures and everything tomorrow. This is also again helpful for the third chakra, which is the solar chakra. Opal is again for crown chakra. So you see a lot of crystals are repeating for the same chakra. Green aventurine, I have got it here. If you could see, this is an angel. This is in green aventurine. This also comes in jade, which is similar in color. Jade is like that lucky color stone that a lot of people use it in feng shui, green ducks and all. So this is green aventurine.
It is for heart chakra primarily, and it is also useful for blood pressure, lot of other usages, right? Bloodstone, just by the name, this is good for your blood flow, for BP. This is red in color, and this is a very nice grounding crystal as well. Carnelian, see, this is a carnelian. If you guys can see, this is a small red orangish color carnelian crystal. This is for a lot of physical energy. This is a protection stone also for your sacral chakra, for your root chakra. This is for 2-3 chakras again. This can be useful. Then this is chrysoprase. It aligns all the chakras, especially for heart chakra. Then this is a Herkimer diamond. It's just like, looks like a diamond only. It looks like a diamond. But, it looks like a diamond, and it can be used as an alternate to diamond also. A lot of people use it as an alternate to diamond. Green, fluoride, garnet, hematite. Again, the lot of purposes of the chakras are same. This is for cleaning all the chakras. Kyanite, lapis lazuli is for the throat chakra. When you have a lot of issue in throat, and there is one more thing, all these crystals, they are not only used for any physical issue, like aapko gale mein dard hai, you have a tonsil or just cough or something. This is also used for communication. So when we are talking about the throat chakra, certain people who don't have a lot of confidence, or they are wo atak ke bol rahe hain, or they are not very clear with their speech, or they are not able to open up, they are not able to express themselves by speaking properly, or somebody who's into the communication field, into sales, training, occult science, may you need to speak a lot. And I have a lot of clients who are actually, there is some physical issue with them in the throat, that they're not able to speak clearly. But when they go to the doctor says that it's more of something emotional, or you're probably holding something back. When they come to energy healers, they say the same. So this is a crystal, very useful crystal, used for that purpose. Malachite, moldavite. If you can see, I have got a very, very small specimen of moldavite, because this is not actually a crystal, but this is a meteorite. This falls from the sky on Earth. So this was found first in Czech Republic. So this is a very, very strong crystal for heart chakra, third eye, crown chakra, throat. Primarily, it is very strong for heart chakra. And the reason why most of the people will have only these many small pieces, even when you go out to buy this, you will not get it in very big pieces, because first, this is very expensive. Secondly, it is a very strong stone. Not everybody can take the vibrations of this stone. अगर आप इसको बहुत टाइम पहनते हो, ये मैं स्पेशली मेंशन इसीलिए क्रिस्टल को मैंने करा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल बाय इट एंड सेल इट टू देयर clients, or they wear it for themselves for a longer period. So if you wear it for a longer period and if it doesn't suit you, so you feel as if heart chakra बहुत ज़्यादा खुल गया है, ऐसा लगेगा कि यार heart attack तो नहीं आने वाला. So it's a very strong crystal. I use it for healing. So that's why a very small piece is all right. Usually people would consider कि सारे crystals जितने बड़े हो उतने अच्छे हो. That is true, because every crystal is basically a magnifying thing. It is magnifying. The main core purpose of a crystal is to magnify positive energy and to nullify negative energy. And very important point for everybody to know, ये बहुत ज़्यादा myth मेरे को market में सुनने को मिलता है कि जी ये crystals ना हमारे negativity ले लेते हैं, ये crystal negative हो गया है, बहुत टाइम से हमारे पास पड़ा है ना, अब तो अच्छा नहीं है, इसने नेगेटिविटी ले ली है. या when I am doing energy healing, so people will say I am removing all my crystals, or I have removed my, because उनमें मेरी नेगेटिविटी निकल रही है. That is absolutely not true. Even if you wear, there is one important point which I am telling you in between. Even if you wear 20 crystals, doesn't matter. If you can you guys see that how many bracelets I am wearing? Is it visible? Yes, Yeah, yes. Gitanjali is happy. Nitin is also trying to show off his crystals, right? So
I'll tell you how to actually know in the later stage how many crystals you should wear. वैसे तो you can wear 500, doesn't matter. When I'm doing healing, I wear maximum number of crystals or whatever I feel like I wear it. And जितना बड़ा होता है, like this is a tiger's eye. This is the raw form. अगर आप टाइगर्स आई का ब्रेसलेट देखोगे, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, तो इसमें हल्का सा शाइन है. टाइगर्स आई इज लाइक कैट्स आई. जैसे कैट की आंखें होती है, दिस इज कैट्स आई. So tiger's eye is in the raw form. The crystals are not very shiny. इसको जब polish करा जाएगा, you know, shine करा जाएगा, then it will become that shiny part. So this perception that people have कि my crystals catch negativity when I am releasing the negativity, or they, you know, stop working after some time, that is not true. There is only one cleansing that is required, maybe after 6 months or a year or every full moon night if you feel like doing it, which I will give you an introduction about that as well. Probably if we have time today, otherwise we'll put it in tomorrow's session. So these crystals can be used irrespective of any astrological relevance, irrespective of any knowledge. आज आप में से अगर कोई भी किसी भी crystal healing किसी भी modality में नहीं है, still you can be, or you already are a crystal healer, because all you need to understand is that first understand with all the colors. If you don't understand anything else, जैसे आप कुछ नहीं समझ आ रहा, सर मुझे मेरे भेजे में नहीं पढ़ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं 15 दफा अटेंड कर चुका हूँ, मैंने बेसिक भी कर लिया है, मैंने एडवांस भी कर लिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, then this is the core for you. Can you see what I am doing right now? I am showing you the colors. ये अगर आपको याद हो जाए with respect to your chakras, violet, indigo, blue, vibgyor, like that. So you are an energy healer already. You are, I mean, you are a crystal healer already, because if you start using these crystals according to the color, even if you start keeping them on these points, that's the start of it. Then there are many ways to enhance the, you know, healing or how to use them for yourself. So that's the core main thing of it. Now let me go a little ahead. Just let me tell you about a little more of these crystals. Like this is green. This one is green tourmaline. अभी अलग अलग crystals है ना, हार्ट चक्रा का आपको 3-4 दिखाया. इस एक और है green tourmaline, हार्ट चक्रा. इसी में there will be so many other colors. Like I showed you tiger's eye. Tiger's eyes is usually brownish in color with a little bit of luster, which looks like, you know, eyes of the color. But tiger's eye, same crystal, has the same use. It is good for your eyes, it is good for your root chakra. But when the same crystal comes in different colors, like this tiger's eye is in purple as well, this tiger's eye is in green as well. So now it is a no-brainer that if you don't even want to, you know, remember everything, or you are, because you are into other professions as well, so अब आप ये color के साथ correspondence कर सकते हैं कि green है ना, green tiger's eye है, tiger's eye मेरे root chakra के लिए, मेरे sacral chakra के लिए, but because this tiger's eye is green in color, now this goes to what this will be used as the heart chakra as well. And then one of the simplest way for a lot of healers to utilize crystals for themselves or for their clients or for their family or daily life is 7 chakra. This has got all the chakras ka ek crystal, and then it is either in Rudraksh or a black tourmaline or a black obsidian. So black color का मतलब अभी आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी चक्रास हैं किसी में भी आपको black color नहीं दिखा होगा, right? Black is associated with negativity. But when we talk about a crystal which is in black color, this is associated with stopping the negativity. Any crystal which you get in black color is to absorb negativity, stop negativity, and convert it into a positive energy. इन crystals का काम, जितने भी हम ये natural crystals की बात कर रहे हैं, इनका एक beyond एक level है. Like in astrology, when we are using gemstones, उनका एक level है that they are only doing the positive part, right? But in these crystals, besides doing the positive part,
they're not just doing one part. First, they are stopping the bad energy for any crystal I'm talking. Stopping the negative energy and then converting it at the same time, converting it into a positive energy. मतलब वो एनर्जी कोई भी ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्लॉक कर दी, उसको कुछ आगे चेंज करेगा. उसका पर्पस क्या है? पॉजिटिविटी में सबसे पहले चेंज करना. एंड इट इज ट्रू, द बिगर द क्रिस्टल the better it is, because this is a magnifying stone, you can say. जितना बड़ा होगा उतना मैग्नीफाई करेगा. जितना रॉ पीस होगा, रॉ एकदम नेचुरल, ये अर्थ से एज इट इज निकला है, उतना ज्यादा बेटर होगा. एंड टू यूज एनी क्रिस्टल, इट इज नॉट जस्ट 1 2 3 आपने एक क्रिस्टल उठाया, चाहे जमीन से या शॉप से लिया या किसी से भी लिया, एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट. दैट इज not the right way of doing it. There is a plus point in all of these crystals. When we talk about, I have got a very huge variety which I am just trying to show. This is the white quartz, the first form of crystal. So they can be programmed. इसमें एक benefit है कि आज आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए इसको प्रोग्राम करा जा सकता है. आज आपने अपनी सिस्टर को दिया तो आप इसको एक दफा वॉश करके इसको दोबारा रीप्रोग्राम करके आपकी सिस्टर के लिए यूज कर सकते. And somebody, a client comes to you or wants some crystal, so you can program it according to their name or their purpose and give it to them. And they can also gift it along the family. Usually जिसके लिए है उसके लिए रहता है, but अगर healing में आप use कर रहे हो तो you can cleanse them, reprogram and then again use them. Right? Is there any specific life for the crystals? And there is one more question: how do we how do we make these crystals work? I was actually saying the same thing, how to make them work. How to make them work is, see, if you are not into any type of energy healing right now or any occult science, जैसे सब लोग नहीं है, certain people just like the crystal or they have used it, somebody gifted them the crystal, they got inquisitive and they love it, they got attracted, तो उनको ये use करने की इच्छा है. So there is one simple way which is applicable for any crystal in the world. How to use them, how to program them first. आपने ये crystals लिए, आपने अपने दोनों palm के अंदर रखा. Now you closing your eyes and you putting intention to the crystal, that with the name of the crystal, that white quartz, please be programmed for my highest good. Or you have in mind, यार मेरा job interview है कल, please help me, I am not well, मेरा boyfriend से मेरी बात करवा दो भाई, मम्मी पापा से ये करवा दो, मतलब anything, doesn't matter. And Nitin is going to use this for this purpose, I know now. So it doesn't matter, anything आप किसी चीज के लिए ये मतलब you can talk to them. Tomorrow I am going to tell you very weird usages of these crystals, which is tomorrow is like a bonus thing, which I'll tell you in the end of the class ki kal ka bonus ye hai. These are like human beings, these are like your friends, there are so many usages of these crystals and so many forms. इन्हीं का चम्मच बनता है, बाउल बनता है, lot of things, you can make anything out of it, these are all available. तो simply आपने रखा, अपनी एक intention डाली, white quartz, आप मेरी good health के लिए हो, मेरा exam अच्छा, मेरी health अच्छी रखना, or I am losing weight, help me lose weight, help me, look good, any purpose. So this is the way of programming one. Second, अब इसको use कैसे करना है? अब use कैसे करना है? अगर तो raw है, natural है, अब इसको आप पहन नहीं सकते हो, odd लगेगा, there is no way to wear it. So you keep it in your office, keep it in your house, and the maximum time that you spend in your entire life after bathroom, washroom, is your bedroom, right? So आप bedroom में 8 घंटा तो सोते ही हो ना, ऑफिस में भी 8-9 घंटा रहते ही हो, ब्रेक भी लेते हो, तो ऑफिस में, घर में, बेडरूम में रखना है. अब इसका पर्पस क्या है? एक एक क्रिस्टल का पर्पस एक ही है, आपका ऑरा, आपका चक्रास, और आपके ऑरास और चक्रास पे ये वर्क जब करेगा जब ये आपके पास रहेगा, when it is in your aura energy field. So aura energy field का मतलब है आपके बेडरूम में, आपके घर में, आपके आसपास. अब जैसे let me give you an example. Like see, this is a rose quartz crystal. I've got a keychain, looks very nice. I've got a pyramid. I've got certain
raw stones. I've got bracelets of these, you know, people can go. So who can tell me that what is the usage of a rose quartz? Does anybody know? I can't see the chat actually. Now I can see. Your belt Love side, and yes, you can keep the compassion. belt side also. It's for compassion, Relationship. love, and relationships. Yes, yes. It You are right. balances the emotional content of our body, and it helps in healing your emotional control over yourself, which is Yes. directly Charges. which is directly indirectly related to the relations, to the all that Venus planet, we can say. Yes, you have actually related it in the right way. See, these But are it no charges crystals. any crystal. Any crystal it can charge or cleanse. Matlab, yeah, matlab, it's like half right. Not complete right, but yeah, half right hai. Matlab, you can do, but not everything, but not all crystals, but yes, you can do. So you're on the right track. So see, these are no brainers. अब आपको black देख के negativity लगता है, दिखता है अंधेरा है भाई, काली रात है, black होगा तो अंधेरा होगा. White देख के people think of peace, शांति. Pink देख के ना automatically female energy, Venus, love, relationship, pink rose, you know, ये दिमाग में आता है. So yes, rose quartz is for love and relationship. Now how to, I've told you very simple way, just a very basic level way how to charge them, how to, you know, make them ready for wearing. Now how to use them? You can use it in a keychain. You can use it as a mala. You can use it as a bracelet. You can use it as fancy bracelets, necklaces, or you can use it as paperweights. Can you see this? ये मेरे को ना कल दिखाना था, but आज I am just showing it to you guys. That does anybody know what this is? Sir, if you can just Pyramid, stop no? sharing the screen once, then you can be visible pyramid. clearly. This is a crystal pyramid, right? Crystal pyramid. Orgone pyramid. हाँ, मतलब you guys are almost right. मतलब ठीक है, कुछ पता है, आप लोग homework करके Crystal आए हो pyramid पहले for से. health and prosperity, maybe. Yeah, there are n number of uses. So I was Yeah, just there are trying. different types. Is it an organite? इनसे बहुत फॉर्म्स में यूज कर सकते हो. पेपरवेट हो गया, चाहे कीचेन हो गया, एंजल हो गया. इन्हीं का मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड इनका क्या क्या नहीं आता. दिस इज अ कोस्टर. दिस इज सेलेनाइट. अब ये कोस्टर का मतलब है इस पे चाय रख के पियो, या इस पे अपने सारे क्रिस्टल चार्ज करो, या इसके ऊपर खुद बैठ जाओ. It is going to charge you entirely from head to toe, each and every chakra. So, you know, this is a part of the weird usages or the bonus usage of crystals, which I'll, you know, give you an idea about tomorrow. So, you know, these are very weird and friendly beings, you know. The pyramid, you can't even imagine. the pyramid one, is that an organite? Yes, that's the right word. That's an organite. The word is organite, yes. The Okay. term, you know, when you want to buy it, so if you बोलो ना भाई वो पिरामिड दे देना, तो वो इतने सारे पिरामिड आप देख लोगे कि आपको समझ नहीं आएगा लेना कौन सा है. So the term for this is called organite. But not, I've heard that not all organites are the actual organites. It has to be some kind of connection within the crystal, like some alum. I don't know what kind. हाँ मतलब see that's why we are here today. You've got half information correct. Half information correct नहीं है. Right, तो So don't mind, I have a similar question. My name is Isha. Similar question. Actually, बहुत सारे crystals जो है ना, they look similar to agate. तो बहुत सारे लोग ना fake you know agates भेजते हैं ये बोल के कि ये amethyst है, ये rose quartz है, ये you know things like that. So how do we differentiate between the original and the fake? What they do is आपने जो agate word use करा ना वो सही use करा है. अभी ये rose quartz है. अभी वो क्या है कि agate मतलब क्या होता है कि वो rose quartz नहीं है, but वो pink color का पत्थर है, वो जमीन से निकला है. Correct.
तो क्योंकि उनके पास होता नहीं है या वो सस्ता पड़ता है, तो जस्ट टू मिसगाइड यू वो आपको एगेट भेज देगा। वो काम तो सिमिलर करेगा, सेम नहीं करेगा, सिमिलर काम करेगा बिकॉज ऑफ द कलर। काम सिमिलर करेगा, सेम नहीं करेगा। नाउ as I told in the beginning of the class that you cannot identify it by the naked eye unless you have a lot of experience, unless अगर आप बहुत सालों से इन क्रिस्टल से यूज कर रहे हो तो आप बता दोगे कि भाई ये रोज क्वार्ट्ज नहीं है, ये नहीं हो सकता। और इसके अंदर वैरायटी बहुत है, लाइक दिस पीस इज इंडियन रोज क्वार्ट्ज, दिस इज मेडागास्कर। अब ये ऐसे नहीं बता सकते। इसका शॉर्ट तरीका सिर्फ एक ही है, वो है टेस्टिंग थ्रू लैब। शॉर्ट तरीका तो वही। दूसरा तरीका है, इफ यू आर एन एनर्जी हीलर लाइक मी, यू गेट द वाइब्रेशंस और यू सी विद योर एक्सपीरियंस एंड यू से कि भाई ये तो रोज क्वार्ट्ज नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं है। आप जो मर्जी बोलो, मैं नहीं मानूंगा। तो और कोई तरीका नहीं है। जैसे जेम स्टोन्स में भी यही होता है। व्हेन आई एम सेलिंग जेम स्टोन्स, my way of making the person who is buying it satisfied is the only through certificate. अगर आज आप एनर्जी हीलर, मैं भी एनर्जी हीलर हूँ, मैं भी जब खरीदता हूँ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और फ्रॉम द गाइज हु आर माइनिंग इट, आई ऑल्सो आस्क देम फॉर सर्टिफिकेट्स। बट क्या होता है कि क्योंकि जैसे ये पीस है, अब ये 200-150 रुपए का आएगा, इसका सर्टिफिकेट फिर कोई नहीं बनाता क्योंकि सर्टिफिकेट उससे तो जेमस्टोन्स फिर भी कहा जाता है कि अपने पिल्लों के नीचे रख के एक रात सो तो आपको फर्क पता चल जाएगा। नहीं, that's a wrong theory. That's absolutely a wrong theory. That's only applicable to certain gemstones which probably are very high degree, like a नीलम। वो आपको सूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। राइट। असली नकली उससे नहीं पता लगेगा, कभी नहीं पता लगेगा। आप उसके साथ 5-15 दिन सो जाओ, नहीं पता लगेगा। एंड somebody asked me, ये जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होती हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रिस्टल थेरेपी सीखते हैं, तो दे हैव यूजुअली दिस क्वेश्चन एज टू हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द ओरिजिन। तो फिर बताना मुश्किल हो जाता है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल क्रिस्टल्स। These are the only ways, there is no other way out. And somebody asked me कि अभी इनका लाइफ कितना होता है। मैंने आपको इसका एक्टिवेट करने का तरीका का बेस तरीका सिर्फ एक तरीका बताया है। इनके यूसेज के तो अलग अलग तरीके दिखा दिए, अलग अलग शेप्स दिखा दिया आपको मैंने। अब इनका लाइफ के ऊपर क्या है कि इसी प्राइमरली जेमस्टोन्स का लाइफ होता है। सम पीपल से कि अगर आप क्रिस्टल्स को अपने हैंड में रखते हो तो उनकी हीट से भी आप पता लगा सकते हो कि वो ओरिजिनल है या नहीं। नहीं, that is not a sure shot. I have heard like this only. That is actually क्या है, ये ना शॉर्ट तरीका नहीं है। अभी क्या है कि वो आपको बोलता ये ना सर वो असली है तो आपको वार्म लगेगा। चाइना से इतना सामान आता है जो कि इसको अलग अलग कंपाउंड से बना देते हैं और वो मिक्स होता है, असली नकली जो भी होगा मिक्स होगा, तो वो भी वार्म लगेगा। सो दैट इज नॉट अ वेरी शॉर्ट वे ऑफ डूइंग इट। Energy healers like me get to know, like if I hold this crystal in my hand for maybe 2 minutes or maybe 10 seconds or maybe 10 minutes, depending upon what my vibrations at that time. So I will get to know that this is a real crystal or not because of the energy movements. And certain strong crystals का energy movement बहुत जल्दी पता लगता है, जैसे कि मोल्डोवाइट जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, that if a lot of people use this and उनको ये उनका body या उनका मेंटल स्टेट इमोशनल अभी इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो दे विल फील लाइक दे आर गेटिंग अ हार्ट अटैक। आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज माई सेल्फ। आई वोर दिस क्रिस्टल फॉर 6 months and I refused to remove it because the power that it was giving me was tremendous. And in those 6 months I personally drove to a hospital while coming back from somewhere, that feeling that I am probably having a concussion or a heart attack or something. So I'm not trying to scare you or something, but I'm trying to tell you the power of these crystals. Gemstone में आपको ऐसा power नहीं महसूस होगा, उसका अलग effect है, good या bad. इसका it is only about power. इसमें bad effect नहीं है कोई. It is giving you so much of power that if you are not ready for it, to get ready you need to have your chakras balanced and manage, and then doesn't matter. You wear 100 bracelets, you wear as many as you like. Yeah, that is not a problem. So talking about the life, crystals टूट जाते हैं, तो is it like nothing can be done about it?
we have to bury it with the earth, or is there a way to reuse it? See, primarily तो अगर वो टूट गया तो वो एक तरीके से ज्यादा काम का नहीं रहता, बट एक उसका तरीका है. There is one way out. Like this is a natural crystal. Yeah. See, this is a natural crystal. Yeah. अभी कुछ भी बनेगा, ये बीड्स भी बना है तो वो इसी क्रिस्टल को पॉलिश करके बना है. So then it has got a defined shape. तो अगर आपका कोई डिफाइंड शेप का क्रिस्टल टूट जाता है, जैसे कि ये डिफाइंड शेप है गोल, ये डिफाइंड शेप है पिरामिड. अगर ये टूटता है तो इसका पर्पस खत्म हो जाएगा. पिरामिड का पर्पस है, इट इज एन एनर्जी जनरेटर. If it breaks from any corner, so the energy generator part goes finished. It is of no use. उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, इसको छोटा छोटा तोड़ सकते हो with a hammer, and then you can use it in the crystal grids. और इसका जो पाउडर है, आप कोई डू इट योरसेल्फ ज्वेलरी बना रहे हो या आप कोई फेस मास्क बना रहे हो, उसमें लगा सकते हो. उसका अलग यूसेज कर सकते हो, बट इट विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट एज अ पिरामिड. अगर ये ब्रेसलेट के अंदर से टूट गया है तो वो ब्रेसलेट में आप नहीं यूज कर सकते दोबारा, वो उसका फॉर्म खत्म हो गया. अगर ये नेचुरल रॉ फॉर्म है तो ये यूज ही हमने नेचुरली करना है, इसको हमने ब्रेसलेट में नहीं डालना है. इसका इट इज स्टिल फाइन. बट व्हेन वी हैव मेड अ शेप लाइक दिस इज मेड इनटू अ राउंड शेप, दिस इज अ चक्रा बैलेंसिंग स्टोन. आप स्टोन को किसी भी शेप में यूज कर सकते हो, बट ये चक्रा का ना, वन ऑफ द चक्रास का साइन बनाओ. सो दिस हेल्प्स इन जनरेटिंग द एनर्जी बेटर, ज्यादा अच्छे से जनरेट करता है, जैसे लाइक अ श्री यंत्र. अगर ये टूट गया, अब ये क्रिस्टल एज अ चक्रा बैलेंसिंग नहीं काम आएगा, एज अ श्री यंत्र, एज अ एनर्जी जनरेटर नहीं काम आएगा. आप इसको तोड़ के क्रिस्टल ग्रिड्स में या आपके कोई डू इट बाय ज्वेलरी में ऐसे यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर आप नहीं कोई यूज है तो यू हैव. सर, इज इट लाइक दैट, लाइक जो जेमस्टोन्स होते हैं उनका अगर नेगेटिव इफेक्ट होता है या वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो आपको उनका इल इफेक्ट जल्दी पता चल जाता है. बट मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है, जो हीलिंग क्रिस्टल्स है वो अगर आपको सूट नहीं कर रहे हैं, आपके ऑरा पे सूट नहीं कर रहे, तो वो उससे ज्यादा पहले पता चल जाता है कि इट इज नॉट सूटिंग योर ऑरा और समथिंग लाइक दैट. सर, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार आप प्लीज आपका जो सेशन है वो प्लीज पहले कंप्लीट कर लीजिए, एंड Q&A यू प्लीज टेक एट द एंड, सो दैट आप जो बताना चाहते हैं ना, हमारा वो मिस नहीं हो. आई जस्ट वांट कि उस पे कोई मिस आउट नहीं होना चाहिए. यू टॉकिंग अबाउट द टोटल टाइमलाइन ऑफ ये क्रिस्टल, कितना उसका जो लाइफ. अभी जो मैं पॉइंट पे आ रहा, वही पॉइंट आ रहा था कि व्हाट इज द लाइफ लाइन. इन जेमस्टोन्स देयर इज अ लाइफ लाइन that is considered from 3 years to 5 years to 6 years depending upon the gemstone. But when we talk about crystals, there is no lifeline. Crystals का कोई lifeline का problem नहीं है, as long as आप इनको cleanse करते रहो और इनको charge करते रहो. चार्ज करने का 3-4 तरीका है, जिसमें से अभी तक मैंने आपको एक तरीका बताया है, which is to wash it, clean it properly and keep it in your hand and charge it with the intentions. There are other ways of charging crystals which we'll be talking about tomorrow, जिसमें कि एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से चार्ज हो जाता है और एक क्रिस्टल मून वाटर से या सॉल्ट वाटर से भी चार्ज होता है. सो देयर आर 2-3 ways of it. और सनलाइट का भी एक तरीका है, तो 4 तरीका तो कम से कम है. So that we will talk about tomorrow. So the crystal has no life, but once the color of the crystal starts going dull, ये होता है, कुछ सालों बाद इसका क्रिस्टल का कलर चला जाता है. चाहे वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल ही हो, उसका भी कलर ना व्हाइटनेस थोड़ी ऑफ हो जाती है, उड़ने लग जाता है. सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब इसमें उतनी मैग्नीफाइंग पावर नहीं रही. एक तो ये तरीका है आईज से देखने का. दूसरा, व्हेन यू आर एन एनर्जी हीलर और व्हेन यू कैन फील द एनर्जीज, तो आपको उसकी एनर्जी ही नहीं महसूस होगी, या आप उसके थ्रू अगर किसी को एनर्जी भेज रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू हील समबडी, इवन इफ दैट पर्सन इज सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डजंट मैटर, तो आप क्रिस्टल के थ्रू मैग्नीफाई करके भेज रहे हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो एनर्जी उसमें नहीं रही. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन change it. You can just keep it as a showpiece or dispose it off. So usually इसका भी मतलब
अगर ज्यादा देर आप ओपन में, बहुत ज्यादा धूप में ना रखो, ओपन में इट्स फाइन, बट बहुत ज्यादा धूप में ना हो, तो 5-6 ईयर्स आराम से ज्यादा ही चलता है। उसका मैग्नीफाइंग पावर इतना प्रॉब्लम नहीं देता, कम नहीं होगा। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। So yeah, this is like a basic kit with 7 type of chakras, 7 type of crystals, which when we go into the advanced class, I will somehow try to share a link with you guys, or somehow I will make sure कि अगर आप 100 लोग में से 100 वहां आ रहे हैं, तो आपके 100 के पास ये होना चाहिए। चाहे आपके पास पहले से कोई हो, that is fine, but small sized raw or polished stones you must have, because that is the core of crystal healing. Because एक तो सिर्फ पहनना हो गया, एक इससे आपको करना क्या है, आपको एक तो यूसेजेस आप पूछ रहे थे, तो एक तो हो गया पहनना, मेरी बॉडी मेरा ऑरा, बट सिर्फ पहनने से सारे चक्रा नहीं बैलेंस होंगे। या आपका घर में आज किसी का सर दर्द हो रहा है, और योर फैमिली मेंबर कम्स टू यू एंड से आई हैव अ स्टमक एक, और I have a loose stomach or something, or I am having extreme headache, या मेरे को टेंशन है, मेरे को आईज में दर्द हो रहा है, या all those type of problems associated with chakras, or I am feeling low in energy, or I have too much of energy, तो उसके लिए ये यूज करा जाता है। And then there is a very important term that we use in crystal healing, that is called grounding. I am right now assuming that everybody knows what is grounding, but I will give you an idea. Grounding means कि जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी हीलिंग कर लेते हैं, या आप एक जनरली ही बहुत एक्टिव इंसान है, बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, या कई लोग आप देखते होंगे कि वो जब आलस में पूरा दिन घर में पड़ा रहेगा, बट जब उठेगा तो ही इज चार्ज्ड विद एनर्जी एंड ही इज गोना रॉक द वर्ल्ड, पार्टी एनिमल। सो उनका रूट चक्रा या उनके और चक्रास बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, दैट इज बाय नेचर, बाय देयर कोर, बाय बर्थ, और दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ कोई एक्साइटिंग न्यूज मिल गई, आपने नोटिस करा होगा जब आपको एकदम न्यूज मिलती है, अरे कल से लॉकडाउन खुल गया, या a lot of people are smiling by listening to this कि कल से लॉकडाउन खुल गया, भाई सब कोरोना भाग गया, तो एनर्जी आ जाएगी ना, चलो भाई सबसे पहले तो पार्टी करें, और आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ईट दैट, तो आपके अंदर एक एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। आप टिकते नहीं हो, आपको पता है कल आपका पेपर है, या कल आपको पार्टी जाना है, या कल आपको कुछ स्पेशल गाड़ी की डिलीवरी लेने जाना है, सो यू विल बी एक्टिव। घर वाले बोलते नहीं है भाई क्या खा लिया, रात को तुम सो ही नहीं रहे हो, और यू आर रनिंग अराउंड इन द हाउस। So that means that your chakras are all overactivated, which is also a problem. So that is where the term grounding comes. Grounding means grounding means that आपका एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो हम मदर अर्थ को दे रहे हैं, और उसमें हम कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हैं। सो इफ यू डोंट हैव अ क्रिस्टल, अगर आप में से किसी के साथ भी इस दौरान ये ऐसा फीलिंग होता है कि इतनी एनर्जी आ गई है, रात भर सो नहीं पा रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कोई पता नहीं कितनी कॉफीज पी ली है, या आप में एनर्जी कैफीन की कहां से आ गई है, सो वॉक ऑन द अर्थ बेयरफुट। मतलब घर की जमीन से ज्यादा बेटर होगा बाहर जो मिट्टी है पार्क की। सो your extra energy will be going to the earth, and there is another way of grounding which is a detailed way of how to do it. And then crystals, like you hold a black crystal, and it is supposed to help you in grounding. It is taking all the excess energy from you, you're holding it and sitting for some time, and uska aapko thoda energy kam lagega aur aap so पाओ. So this is a very important term, grounding. चक्रा क्लेंजिंग, एनर्जी हीलिंग सबको पता है, बट ग्राउंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने ये क्रिस्टल्स मेरी तरह पहन लिए 15, तो आप शायद 4-5 रातें सोओगे नहीं। मतलब देयर इज नो बैड इफेक्ट, बट यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी, यू गेट सो मच ऑफ बूस्ट, एकदम एक्टिवनेस आ जाएगा, बिकॉज ऑल योर चक्रास आर ऑल ऑफ अ सडन ओवर पावर्ड। सो उसी लिए चक्रा हीलिंग क्लेंजिंग क्रिस्टल्स के थ्रू होता है। उसका पर्पस होता है, फर्स्ट पर्पस इज cleaning the chakras, second is cleaning के part में आ गया removing the negative energy or the excess energy, then third is adding energy of each color to each chakra, जितना उस चक्रा को चाहिए
ऊपर ज्यादा भी डाल दोगे तो वो तो ले लेगा, फिर आप वो जो आप हो या आपका क्लाइंट है या आपका फ्रेंड है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, उसको दिल में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, बट वो ज्यादा एनर्जी की वजह से हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है कुछ। इसमें से कोई डरने का बात नहीं है, कभी भी कोई इंसान को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा कोई हेल्थ प्रॉब्लम का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड द फोर्थ पार्ट इज देन यू आर सीलिंग द चक्रा। जब एनर्जी डाल दिया, अब चक्रा बंद करना है कि भाई एनर्जी ना निकले ना और जाए। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ चक्रा बैलेंसिंग, बट इट इज यूज्ड best used with crystals. That is why I am talking about that. So this is another picture of, you know, the basic 7 type of chakras. 7 type of crystals: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Vibgyor. अगर ये विबग्योर, आप बस ये विबग्योर याद कर लो, आप आज से चक्रा हीलर, एनर्जी क्रिस्टल हीलर तो बन गए हो, क्योंकि आपको विबग्योर याद है, आपको सारे कलर्स याद है। आपका अभी घर से आज रात से आप अपनी बहन, मम्मी, पापा, सिस्टर सबको पकड़ो और बोलो आ जाओ भाई लेटो, आपके ये चक्रा पे ये क्रिस्टल रख रहा हूँ, आंख बंद करो, बताओ क्या हो रहा है। दिस इज लाइक अ होमवर्क फॉर यू, एंड द प्लस पॉइंट इज नोबडी कैन रन अवे फ्रॉम यू, इट इज टोटल लॉकडाउन। तो आपसे डरेंगे बट भाग नहीं सकते। यूज इट ऑन योरसेल्फ। रात को सर दर्द होता है ना कभी भी, अभी तो आप छोड़ो, आपके पास एक भी क्रिस्टल हो, यहाँ पे रख के थोड़ी देर देखो, यू विल जस्ट रिलैक्स एंड फील, मतलब हैव ट्रस्ट इन द क्रिस्टल दैट यस सम एनर्जी इज हैपनिंग, एंड यू विल फील कि यार सर दर्द हो गया, रिलैक्स फील हुआ है, मतलब कुछ मूवमेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ रिसेप्टिव यू आर। अभी रिसेप्टिविटी का मैटर क्या होता है, लाइक दिस इज अ मोल्डोवाइट, आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस अर्लियर। इसको ज्यादा यूज करने पे लगता है हार्ट चक्रा खुल गया, हार्ट अटैक हो गया। देयर विल बी सर्टेन पीपल whom you will see in your life जो इसको 5 घंटे भी पकड़ लेगा उसको कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट रिसेप्टिव। इफ ही इज नॉट रिसेप्टिव हियर, उनको कोई दवाई भी काम नहीं करेगा, you know. So this is all energy. If you are receptive to receiving energy, I personally do energy healing for people in Amsterdam, in Europe, in US. And recently I want to share one excellent experience that I had. There was a client of mine, she was coming to India from Amsterdam before the second lockdown. So उनका रोज का सेशन का टाइम था रात को 10 बजे इंडिया टाइम से, तो she messaged me that okay, I can sit for the session of energy healing. So I said, aren't you supposed to be in the flight? She said, yes, I'm flying first class और मैंने वाईफाई पे कनेक्टेड है, तो आप एनर्जी हीलिंग करो मेरे। and I used crystals along with that. She has a problem in the throat, so I used blue color crystal, blue lapis. I was using this, just holding it in my hand, and she had an excellent experience. This normal experience of energy healing that she used to have when she was in Europe, the same experience she had in the flight when she was probably over 2-3 different countries. So that's the power of energy. That's the power of thought. That's the power of जैसे वो I'm just forgetting the word, telepathy. होता नहीं है, आप किसी को याद कर रहे हैं, वो कॉल कर लेते हैं उसी वक्त आपको, चाहे वो 7 समुंदर पार होते हैं। Maybe your girlfriend, guys, please smile, guys. अभी नितिन भाई हंसे। So yeah, that's the energy of the subconscious mind, you know. So this is just a basic list of certain chakra stones, like root chakra. Like I told you कि एक ही चक्रा के शायद 20-25 क्रिस्टल होंगे, और उस 20-25 क्रिस्टल का 15-20 यूज होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई रूट चक्रा के लिए ही टाइगर्स आई यूज होता है। सी टाइगर्स आई जब आप सुनते हो तो लगता है आईज, और ये है रूट चक्रा के लिए, विच इज द बेस चक्रा. सो व्हाई इज इट नेम्ड टाइगर आई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द आईज ऑल्सो. सो इफ समबडी इज हैविंग टायर्डनेस इन द आईज, तो वो आईज पे भी यूज कर सकता है और रूट चक्रा पे भी यूज कर सकता है. दिस इज व्हाट we do in the advanced healing, in the advanced crystal classes, that abhi
आपका एक इसी के लिए 10 क्रिस्टल है, बट अब आपको उस वक्त कौन सा एक्चुअली यूज करना है। अभी सेक्रल चक्रा के लिए सिट्रीन भी है, कार्नेलियन भी है, मूनस्टोन भी है, कोरल भी है। Which one do you use? The client is not going to tell you, or you yourself will not know for yourself also, for your family members. So this is what the advanced class is about, कि अब actually use कौन सा करना है वो हमारे को अपनी अंडरस्टैंडिंग में डालना है। उससे पहले अब हमें ये 2 दिन अपने सारे घर वालों को पकड़ के ये उन पे प्रैक्टिस करना है, या कुछ नहीं तो क्रिस्टल को पकड़ के मेडिटेशन ऐसे ऐसे पकड़ना, बॉडी को लूज करके, टाइट नहीं बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, चाहे टेढ़ा बैठो चाहे सीधा बैठो, डज नॉट मैटर, बिल्कुल लाइट, कहीं पे भी भार नहीं डाल के, लेटना है लेट जाओ, ऐसे पकड़ के, दबाना नहीं, ऐसे दोनों हाथ में। ये दोनों हाथ में ना यहाँ पर और यहाँ पर आपको फील होगी एनर्जी। मैंने अभी रखा है तो मेरे को मूवमेंट चालू होगी, मतलब इट डजंट टेक more than 2 seconds for me to feel that movement. And once you come at a level whereby the stone and you, the crystals and you are one, that day will come that wherever you keep your hand on your body, आपको वहां पे ना एक हार्ट बीट या पल्स मूवमेंट शुरू हो जाएगा instantly. It happens with me. I touch my body anywhere ना, मेरे वहां पे एक पल्स मूवमेंट, एनर्जी मूवमेंट शुरू हो जाता है, because these chakras get activated because of the crystals. So at times, you know, when I'm sleeping, if I touch myself here on my shoulders or somewhere, तो मेरे को नींद नहीं आता क्योंकि वहां मेरा एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है, तो मैं हाथ फिर ना दूर करके सोता हूँ या हाथ ऐसे पकड़ के. So it's a good thing because you will develop those you know, healing properties whereby even if you touch somebody lightly तो उनको भी अच्छा महसूस होगा. So that is you know, an added thing. So this is the healing properties that we will go in detail, you know, just a brief about them. We will go tomorrow. I'm just walking you through it to go down. Yeah, so to see, this is a 7 chakra balancing set. So this is one thing that you need to have. This is a must for everybody because इसके ऊपर रेकी के symbols भी हैं, तो इससे enhance हो जाता है. इस crystal से भी काम वही होगा. But because of the Reiki symbols, Chokore, a lot of people here know about Reiki, right? 1-2 level सबने कर रखे हैं, शायद कुछ आइडिया है, या Reiki कभी किसी को करते हुए या सुना होगा या देखा होगा, तो ये symbols बहुत help करते हैं in manifesting the purpose. And these crystals are not only for healing; they are there for manifesting of anything and everything. हाय मेरे को ना वो गाड़ी गिफ्ट में मिल जाए, मेरे को ये गिफ्ट मिल जाए, पापा दे दे, बॉयफ्रेंड दे दे, या मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, इस साल घर खरीदना है. So then we make wish boxes, we make pyramids out of this. वो मैं कल आपको wish box दिखाऊंगा कि wish box में इन crystals को कैसे use करते हैं. And crystals को आप अपने पूरे घर में कहीं पे भी use कर सकते हैं. Rose quartz के बारे में जैसे आप सबने लिखा कि हार्मनी के लिए है, तो यही चीजें हमारे एडवांस कोर्स में समझाई जाती है कि हार्मनी के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आपने रोज क्वार्ट्ज यूज करना है, अगर आपको कपल का रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जी चाहिए, it is not going to overturn everything or it is not going to make you Birla, Tata or Ambani overnight. This is about activating good energies. So you are supposed to keep this in the bedroom, right? अब अगर आपको यही आपका हार्मनी और अच्छा रिलेशनशिप आपकी फैमिली वालों के साथ करना है, तो आप इसको कहाँ रखोगे? ड्राइंग रूम में भी, लिविंग रूम में, बिकॉज लिविंग रूम इज कॉमन फॉर एवरीवन, राइट? अब आप जाके अपने पेरेंट्स के कमरे में जबरदस्ती तो नहीं रख सकते ना, कई लोग तो रख लेंगे, कई बोलेंगे बेटा ये क्या रख रहे हो, हमारे पास मत रखो. किचन इज अ गुड प्लेस बिकॉज सबका खाना वहां बनता है. किचन में जो खाना बन रहा है, जो खाना उस वक्त बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको लिए जो भी खाना बना रहा है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, उस वक्त जो उनकी फीलिंग है ना, वो आपके खाने में आएगी, चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट में आए चाहे गुड इफेक्ट में आए. मम्मी बना रही है, बड़े अच्छे मूड से बना रही है, सर्वेंट बना रहा है, यार ये बड़ा तंग करते हैं, 4 गालियां दे रहा है, एंड ही इज कुकिंग फूड, सो दोज एनर्जीज इज गोइंग. So these crystals are very useful in the kitchen to have that positive energy. Question.
आपने कहा घर वालों के लिए अगर साथ में रिलेशनशिप ठीक करना है, अब हम लेडीज का कभी मायका और ससुराल दोनों अलग अलग होता है, तो मायके वाले तो साथ रहते नहीं है, तो फिर कैसे यूज करोगे अगर समझो मायके वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना हो तो? जो क्रिस्टल का कल मैं यूजेजेस बताऊंगा ना, उसमें एक यूज है गिफ्टिंग, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यूटिलाइजिंग द क्रिस्टल। ये सारे क्रिस्टल 100% वर्क करेंगे, बट अगर यही क्रिस्टल आपको कहीं से गिफ्ट आ जाए या आप किसी को गिफ्ट दे दें, तो उसकी यूसेज 101% हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसको हम देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन इट और दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट। फिर बनता है विश बॉक्स, उसके लिए बनता है विश बॉक्स। ओके। मेरे पास अभी भी आई थिंक 12 विश बॉक्स बने हुए हैं, विच मीन्स फॉर डिफरेंट 12 पीपल आई हैव विश बॉक्सेस वेयर बाय पीपल सेंड मी देयर पिक्चर्स, चाहे वो अपना सास के साथ हो। एक लेडी है, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ की फैमिली के साथ बना रखा है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली के साथ बना रखा है, और अपना हस्बैंड और वाइफ का, तो उनके 3 विश बॉक्सेस मेरे पास पड़े हैं। तो वी डू इट फॉर मंथली, कि 1 महीने का आपका विश बॉक्स मैं बना रहा हूँ, आपको 3 महीने का लेना है, 1 महीने का, विश बॉक्स मेरे पास रहेगा, क्रिस्टल उसमें मैं बदलता रहूंगा और उसमें हीलिंग डालता रहूंगा, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। तो जो बिलीव नहीं करता वो ये है। अदरवाइज उसको आप एक बात बताओ, अगर आप अपने पापा आपके क्रिस्टल्स को नहीं मानते, बट अगर आप उनको ये कीचेन गिफ्ट में दोगे, गाड़ी की चाबी लगा के, दिस तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू से नो। या राइट। You don't have to tell him what it is. Papa, this is a very cool keychain I got for you. For your boss. आपने ऑफिस की चाबी इसमें लगा लो, मेरे ऑफिस की चाबी और मेरे घर की चाबी इसमें लगी हुई है, ये रहा मेरा। इसी में 7 तरीके का क्रिस्टल आता है, मिक्स करके आप लगा सकते हो, यू नो। सो गिफ्टिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, यू नो। जैसे आपने एक 7 चक्रा वाला ब्रेसलेट पहना हुआ है, वो हम हर कोई पहन सकता है? यस, आप परफेक्ट फॉर एवरीवन। 500 तरीके के क्रिस्टल हैं, आप 500 तरीके के क्रिस्टल पहन सकते हो, चाहे वो एक साथ भी पहनो, डज नॉट मैटर, बिकॉज दीज आर ऑल एम्पलीफायर्स। ये आपके रूट चक्रा को कर रहा है, ये क्राउन चक्रा को कर रहा है, ये आपके हार्ट चक्रा को कर रहा है, ये आईज को करता है। ये टर्कोइज है जो सलमान खान पहनता है ना। अब ये टर्कोइज पहनने से कोई भी सलमान खान नहीं बनेगा, ये याद रखना आप लोग। Nobody is going to become a Katrina Kaif or a Salman Khan or a Birla Tata Ambani. This is amplifying the energy of love, relationship, and protecting from black magic or negativity. जो इसका एडवांस sir, if you could stop the presentation now, and because people would want to see it closely, and then again we'll come to the presentation. वैसे presentation is over. I just wanted to show you this slide, that this is how the chakras are placed. If you can see, this is the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, right? So this is how it is on our body. And I think, yeah, the presentation is over for today. So let me remove this. And now we can have few discussions with the participants, and we can take up Q&A. One question I have to ask a question. Okay, just a moment, guys, just a moment. Everyone kindly go on mute. And crystal का effect slowly होता है. Sir, you are on mute too. Sir, kindly unmute yourself, and everyone kindly go on mute. Just drop your names in the chat box, and one by one I'll ask you to unmute. Kindly, we'll do that because we can learn from one another's questions, first of all. Second thing, we'll also get a chance, and we can communicate everything very nicely so that everyone can learn from one another, right? And it is easy for us also. Okay, we'll start with Puneet. Puneet, you can go ahead. Hi, Puneet. Yeah, hi. Thanks, Nikki. Very well explained session, sir. My question is that I have been using chakra stones, not chakra stones, but crystals. And I have got this, if you could see my screen, I have got these 7 chakra stones.
Just a moment, Puneet. I'll spotlight you and everyone can also see. Okay. Yeah. So, now show it like this. Yeah, 1 second. I'll just, yeah. So here I got this 7 chakras, and these are the stones. Yes, you've got the right thing. Yes, यही मैं बोल रहा था कि I want everybody to have this before the advance. I have got this is a tree, amethyst. Amethyst also, and this rose quartz. Great. And labradorite, the black obsidian. Very good. You're already an energy healer. Thank you so much. So, and also I have got various crystals that got broken. So my question is like, actually when I bought this 7 chakras, I got my divorce. So I don't know if that had this massive energy setback or whatever. So, but I had never used it after that. So my question is, can I use it? And if yes, how do I go about it? Like you said about the unfortunate event that happened, see, this has got nothing to do with any of those events. These are all simply magnifying positive energy crystals. इनका एक ही काम है, इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी को मैग्नीफाई करना है और नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करके कन्वर्ट करना है. बस ये एक हैंड इन हैंड काम है इनका. और एस्ट्रोलॉजिकली के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि जी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बुरा हो गया. इन्होंने उस पर्पस पे जाना ही नहीं है. ये बुरे को इन्होंने खत्म ही मैग्नीफाई नहीं करना है, उसको हेल्प नहीं करना है. जो भी अच्छी चीज होगी, जो आपकी, इनका जो पर्पस है चक्रा को करना, आपके उस पार्ट ऑफ लाइफ को इनहैंस करना, ये सिर्फ वो करें. इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने नीलम पहन लिया और आपको वो सूट नहीं करता है और आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या आप बीमार पड़ गए या घर में जितनी भी लेडीज थी वो बीमार पड़ गई या मेन बीमार पड़ गए. कैटेगोरिकली आई एम जस्ट सेइंग दिस हैपेंस, बट दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद दीस क्रिस्टल्स. आप इनको दोबारा यूज कर सकते हो. अभी के लिए आप इनको पानी में धोइए और ज्यादा से ज्यादा आप इनको नॉर्मल सॉल्ट या अगर रॉक सॉल्ट के पानी में धोके इनको यूज करिए. Other rituals are there, which is a part of advanced class, which is cleansing them in the moon water, with the moon energy, with the sun energy, and there are other rituals also with smoke energy, with other forms. So, Sir, one question. Sir, that is fine, but how do I use it after cleansing it? अब इसको आप अपने सारे चक्रास पे रखो. चक्रास पे नहीं, ये तो रॉ पीसेस है ना, इनको आप पहन तो सकते नहीं हो. आप किसी दिन हाथ पे एक चक्रा को पकड़ के बैठ जाओ आधा घंटा मेडिटेटिंग स्टेट में, 15 मिनट, जितनी आप रिसेप्टिव होगा उतना 5 मिनट में आप इसको यूज कर पाओगे. आप अपने बॉडी के चक्रास पे रख लो. अगर दूर पड़े होंगे तो बेनिफिट नहीं करेंगे, मतलब अगर कहीं पड़े हैं तो आपके ऑरा में पड़े होने चाहिए, दे विल वर्क. बट जब ये आपसे कांटेक्ट में आते हैं जो आपके चक्रास के ऊपर डायरेक्टली है आपकी बॉडी में, तो दे वर्क मोर. They are amplifying crystals. थोड़ा सा तो आपका पास ही ऑरा पे करेगा काम, बट जितना पास होगा उतना बेटर. Thank you, Puneet. Shweta, you can take up your question, please. Hi, sir. Thank you for the lovely session. So if you can see my screen, I'm showing you a picture of all my crystals that I have. Is it visible? Yes. Can you rotate the camera? Yeah, now? Yeah. Okay. So I wanted to talk about this particular one. So this was sent to me from the UK by a friend, but it's come in this form. So I don't know if it's broken ya kya hua hai iska. This is natural. Can you see mine? Sorry? Can you see mine? 1 second. Yes. आपका वाला ज्यादा क्लियर है, तो वो है व्हाइट क्वार्ट्ज. मेरा वाला उसी फैमिली का मिल्की क्वार्ट्ज है जी. आपका क्रिस्टल ब्रोकन नहीं है. यू कैन यूज इट. दैट इज नेचुरल रॉ फॉर्म. Okay. So it's good. Right. So it says it's a Liranium Caribbean quartz or something like that.
मस्ट बी बिकॉज व्हाइट क्वार्ट्स में बहुत वैरायटी आती है, फैंटम क्वार्ट्स आता है, इसके अंदर रेनबो भी हो सकता है, आपको दिखता हो, इसके अंदर अलग अलग कलर हो, तो देयर आर समटाइम्स व्हाट हैपेंस दे मिक्स, जैसे कि ब्लू एंड व्हाइट क्रिस्टल नेचुरली मिक्स हो जाएगा, अंदर उगरा होगा या अंदर होगा, सो इट कुड बी एनीथिंग, वो अभी देख के ऐसे फोटो पे देख के पता नहीं लगेगा वीडियो, लाइक दिस इज अ मीटियोराइट, यू गाइस कैन सी, दिस इज अ मीटियोराइट, दिस इज नॉट फ्रॉम अर्थ, ये वाला शायद आपको दिख रहा है, ये वाला क्रिस्टल जी, ये अर्थ का नहीं है, दिस इज टैक्टाइट, यू नो, दिस इज टैक्टाइट, दिस इज अ मीटियोराइट दैट वाज फॉलन ऑन अर्थ, तो ऐसे अलग अलग बहुत वैरायटी क्रिस्टल्स हैं, ये जो आपको मतलब अर्थ पे नहीं होंगे, बट वो क्रिस्टल के यूज में ही आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड एनर्जी एनहांसर्स. Okay. Okay, sir, my other question is, how many crystals can I keep on my bedside? Unlimited. So bedside मेरा ऑफिस नहीं है, मैं आपको दिखाता, मेरे एक ही डेस्क पे आई थिंक शोकेस टाइप बना है डेस्क है, मेरे ख्याल से 80-90 वैरायटी क्रिस्टल्स का है. Wow. Doesn't matter. I have No, because they say not having too many crystals by your bedside is not too good, because सिर के पास बहुत सारे अलग अलग crystals. बेडसाइड पे आप ज्यादा नहीं रखिए, बेडसाइड पे नहीं, डेस्क पे रखना इज फाइन. No, I'm talking about bedside. Bedside पे बेड के साइड पे आप क्या करने जाते हैं, आप सोने जाते हैं. अगर आप सोने के वक्त पे क्रिस्टल्स रख रहे हैं अपने ऑरा सर्कल में, तो वो आपके जो चक्रास है उनको क्लेंस कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, उसको तो रुकना आता नहीं है, वो तो करता रहेगा, आप हो जो उसको रोक सकते हो. सो इट इज बेस्ट नॉट टू कीप अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स एग्जैक्टली ऑन योर बेड साइड, स्पेशली टुवर्ड्स योर हेड. अब जैसे ये टाइगर्स आए हैं, ये आप अपने फीट के पास रख सकते हो, अपने बेड के अंडर रख सकते हो. जो ये पिरामिड है, एग्जांपल है, ये अभी मतलब एडवांस कोर्स का पार्ट होता है, ये आप अपने बेड के नीचे रख सकते हो. क्यों रख सकते हो, उसका अलग अलग रीजन है, कोई पेन के लिए है, कोई नेगेटिविटी के लिए है, कोई प्रोटेक्शन के लिए. सो इट डिपेंड्स. सो डोंट so many crystals on your bedside, because that is the place where you're going to sleep. तो आपको सोना है, एक्टिवेट एनर्जी नहीं करना है, तो उधर आप एक दो रख सकते हो, पिंक क्वार्ट्स रख सकते हो, ब्लैक टॉर्मलिन रख सकते हो, व्हाइट क्वार्ट्स रख सकते हो. Okay, sir, another thing is, how do we store these crystals? Like एक बंद डब्बे में रख सकते हैं या खुले डब्बे में रखने चाहिए? मैं तो मेरा जो, वैसे तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. मेरा जो प्रेफरेंस है ना, keep them in the open, let them be conversation starters, keep them throughout your house, use them as show pieces. जैसे अगर आज ये वाला टुकड़ा जब मैं इसको शो केस की लाइट के अंदर रखता हूँ तो ये चमकता है, so people love it, और इसका पर्पस ही एनहांस करना है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी. तो keep it in the open, keep it in the shining light. जहां आपको डेकोरेशन पर्पस आप रखना चाहते हो, सेफ है जहां, वहां रख सकते हो आप. और अगर आप कोई बीम लाइट के अंडर रखते हो, इन्हीं के बड़े बड़े जो पीसेस आते हैं इतने 2-2 किलो 4-4 किलो के, वो आप लाइट के नीचे रखो, तो दे आर लाइक शो पीसेस, यू नो, दे लुक लाइक दे आर समथिंग आउट ऑफ लाख ऑफ रुपीज, जबकि ये बहुत सस्ते होते हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव. लाइक दिस यूज इट एज अ कोस्टर. ओके, दिस इज सेलेनाइट. यस. इस पे आप चाय रखो, अपना पानी रखो, चार्ज करेगा उसको, आप बैठो इस पे. Right. Okay, thank you so much. Thank you so much, Shweta. Now we have Kuvalia. Kuvalia, you can unmute yourself. I hope I'm pronouncing it correct. Yeah, you're pronouncing correctly. Yes. I have a question. जैसे actual में आपने बोला कि enhance करता है positivity. I started to use rose quartz to like build understanding with my family, and I started to notice basically it was to build understanding with my father in first place. आपका आवाज नहीं आ रहा है. What happened when you started using it? When I started using rose quartz, my main purpose was to like build an understanding with my father. So what happened? I just started to somehow rebel him when I started using that. That is what I noticed, and I started feeling emotionally very much on the edge. Like somebody would say something to me, and I'll feel like crying, which was not very much a part of me. So this is what I felt. That happened because of one main reason कि वो रोज क्वार्ट्स ने इतना ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाया कि आपका हार्ट चक्रा ओवर पावर हो गया. You became over emotional.
मतलब आपको किसी ने इतना सा भी बात बोल दिया एंड यू आर you're outbursting with emotion. So इसीलिए चक्रा बैलेंसिंग उसमें पार्ट में आता है कि उस स्टोन ने अपना काम करा 100%, आपके केस में तो ज्यादा करा 100, बिकॉज उसने आपके हार्ट चक्रा को पूरा क्लेंस करके एनर्जी से भर दिया, और वो एनर्जी इतनी भर दी दैट यू वर नॉट एबल टू हैंडल इट. आपके अंदर इतना इमोशनल वो हो गई, एक्टिवनेस हो गई, इमोशनल एकदम टची हो गए आप. सो उसके पर्पस के लिए फिर यही है कि आप उनके पीसेस कम करो और आप अपना चक्रा बैलेंसिंग खुद करो या किसी से करवाओ. वो स्टोन ने अपना काम करा है, तभी तो ओवर पावर आ गई ना आपके इमोशंस. इमोशनल के लिए ही था वो. फादर के साथ वो इमोशनल हार्मनी करनी थी, बट वो एक्स्ट्रा इमोशन हो गया कि अब आप इरिटेट हो रहे हो और आपको खुद बहुत इमोशनल. वॉच द क्रिस्टल्स वंस. सेकंड, तो आपने प्रोग्रामिंग करके नहीं रखा होगा, हो सकता है उसको प्रोग्रामिंग. अब आप उसको प्रोग्रामिंग रखो, हाँ, उसको वो पर्पस से डालो और हर हफ्ते नहीं करना है, बार बार नहीं करना है, बार बार नहीं करना है. डू इट इन 2 months 3 months, कभी फुल मून, कभी सन पे, कभी और जो तरीके हैं स्मजिंग के, वो जो आगे वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा. बार बार नहीं करना है, वो भी ज्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है. तो कुछ भी इंटेंट डाल, या I get rid of some. That's what you are saying. Other thing which I got to know, जैसे I am a tarot reader and I have some contacts who happen to be of Vedic or some things like that, but I don't happen to have good knowledge in crystals. So while talking to them, I was asking what all are the things that I can use. So I talked what all I got to know that I should be using, like black tourmaline, उसको काफी अच्छा मानते हैं for negative energy. Rose quartz को अच्छा मानते हैं. Amethyst is a मतलब ये for 4 everyone. क्रिस्टल्स हैं जो मैंने आज बताया आपको. Yeah. So these all are considered for everybody. So when I talked with them, they basically started to go about with the Kundli aspect. So do we have to like match it, or anybody can wear any crystal? क्रिस्टल्स में एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्टली नहीं है. कल मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल्स और किस फील्ड में यूज होते हैं. जैसे आपको अभी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के अंदर ये यूज होते हैं कि नहीं होते हैं आपको नहीं पता, तो ये मैं कल बताऊंगा. बट एक बेसिक क्रक्स ये है कि एनीबडी कैन यूज इट. ये एस्ट्रोलॉजी में उपरतन की तरह यूज हो सकते हैं, बट वो पर्पस होता है ऐसे पहनने का या ज्यादा से ज्यादा गले में पहनने का. बट अगर आप और कैसे भी तरीके से यूज कर रहे हैं घर में, हाथ में, तो एस्ट्रोलॉजिकली इनसे डरने की जरूरत नहीं है कि यार ये मैं नहीं पहन सकती, मेरे को ना रोज क्वार्ट्ज सूट नहीं करता. आपके पास चक्रा है ना, हार्ट चक्रा है ना आपके पास, तो आपको कैसे नहीं सूट करेगा. आपके पास क्राउन चक्रा है, हाउ विल एमेथिस्ट नॉट सूट यू. There is this is the color of third eye chakra, crown chakra. This color you need. The issue is कि वो आपको सूट क्यों नहीं कर रहा होता है कि वो पावर आपको जरूरत ही नहीं है, तो वो ओवर पावर दे रहा है, या फिर वो पावर आपके अंदर इतनी खत्म है कि वो डिप्लीट हो गई है. आपके थर्ड आई चक्रा की पावर इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी ब्लॉक्ड है कि आपके यहाँ दर्द रहती है, सर में दर्द रहती है, आपको नेगेटिव थॉट आती है. आप महात्मा गांधी को भी देखोगे तो आपको उसके लिए पहले नेगेटिव थॉट आएगा. तो वो रीजंस की वजह से वो सूट नहीं करता, क्योंकि वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देता. बट लाइफ में कोई चीज गलत नहीं करता. मतलब इट विल नॉट से कि जी मेरा इनसे लड़ाई हो गई क्योंकि मेरे पास रोज क्वार्ट्ज, वो पर्पस नहीं. वो इम्बैलेंस की वजह से है. आपका पावर ज्यादा बढ़ गई चक्रा की या बहुत कम हुई, या आप वो नहीं आपकी बॉडी ले पाई, बस वो. जैसा आपने मुझे बताया, तो I don't need it. I can use it for balancing sometimes, but I don't really need it. No, I did not say you don't need it. I don't know because I have not checked your chakras. I'm just presuming that I'm not. Still, I am not saying you don't need it. मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने आपको ज्यादा एनर्जी आपके चक्रास में दे दी, तो वो आपको वो बैलेंस करने. आपके चक्रा को बैलेंस करो, क्रिस्टल्स को कम कर लो और क्रिस्टल को वॉश करके एक दफा. ज्यादा बार बार रीप्रोग्रामिंग मत करो. आप बार बार रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो तो बार बार एनर्जी दे रहे हो उसमें, वो ओवर पावर कर रहे हो. और सर वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे कुछ लोग पहनना नहीं. Kuvalia, I'll just interrupt there. Sorry to interrupt, but then we'll just give chance to others also. And your doubt, you can put it up on the WhatsApp group. We'll discuss it there. I think that should help.
is a general one. It's based on the thing only. जैसे जाता है and they don't even believe in it. जैसे raw forms में जैसे हमें crystals मिलते हैं, तो can we use? आप रॉ फॉर्म में ऐसे रखो ना, ये देखो ऐसे रख दिया आपने ट्रे में, प्लेट में, सब कुछ घर में रख दो, बेडरूम में रख दो, की चेन में यूज कर लो, एंजल में रख लो, सुंदर लग रहा है एंजल रख लो, रॉ पत्थर रख लो, ऐसे पिरामिड रख लो, ऐसे कोई भी फॉर्म में यूज करो, डजंट मैटर। जितना ज्यादा इफेक्ट होता है जब आपका टच होता है, बट अगर नहीं भी टच हो रहा तो आपके घर में पड़ा है, तो ये सी दिस इज द ट्रे, तो ऐसे रख लो, सुंदर पीस है, कहीं ड्राइंग रूम में रख लो, ट्रायंगल की शेप में रख लो, तो इट्स ओके। They will serve their purpose even if we keep them in raw form. Shape से कोई फर्क नहीं आएगा इतना। वो शेप का फर्क पड़ता है, ट्रायंगल जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, पेंसिल सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, these are called genetics, otherwise raw is fine. Raw is fine. Raw or tar, these are like tar is first then raw in case of priority. Okay, thank you. Raw is the first. Raw is first. Okay, thank you. Mehak, you can take up your question quickly. Now we'll have quick Q&A. Yeah. Sir, can you if Hello. you suggest any stone to maybe? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। Can I ask now? Can I ask like? Yeah. Yes, Mehak, you can ask. Okay. So someone I know had started wearing black tourmaline, rose quartz, and citrine. So she kept changing it in the span of say 1 month, 15 days. She tried wearing another crystal, but after every time she wore that crystal, her call, उसका call यही आएगा कि I think it's not suiting me. मुझे negative कुछ ना कुछ, या तो मुझे panic attacks आते हैं या मेरे साथ कुछ negative हो रहा है. I just feel I cannot wear it. So I have never faced that with anyone or with myself. So why is it happening with her? Chakras are not balanced, overpowering. Or what she was doing was right. जैसे मैं किसी को recommend करता हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या जनरली recommend करा कि भाई आप ना ये 6 क्रिस्टल ले लो, चाहे आप ब्रेसलेट में ले लो, चाहे आप लॉकेट में ले लो। अब मेरे जैसा बंदा तो 6 के 6 पहन लेता है। अब नॉर्मल इंसान नहीं पहन पाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स ऑड टू देम। तो अब यही तरीका है, आज मैंने ब्लू पहना है तो आज मैंने ब्लू पहन लिया, आज मैंने ब्लैक पहन लिया, कल मैंने अपनी ड्रेस से मैच करके रेड पहन लिया। सो दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, बट रीजन वाई, एक तो उनकी रेसेप्टिविटी नहीं है, वो नेगेटिविटी, अगर वो नेगेटिविटी ही अपने दिमाग में रखेंगे तो नेगेटिविटी एनहांस होगी, not because of the crystal, because of her own thinking. One. Secondly, the other reason is that her chakras were either depleted or overpowered. या तो वो क्रिस्टल की वजह से उनका वो वाला चक्रा बहुत ओवरपावर हो गया है, बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग हो गई है ब्लैक टॉर्मलिन की वजह से, तो उनकी वो बिल्कुल एनर्जी है नहीं, तो नेगेटिव फील हो रहा है। यार मेरे को तो चक्कर आ रहा है, मैं जब जाती हूँ ना मेरा घबराहट हो जाती है, मेरा चलान कट जाता है गाड़ी का, मेरी गाड़ी टो हो जाती है, मेरा टायर पंक्चर हो जाता है। Exactly. She is facing depression as well. हाँ, ये होगा। और अदरवाइज अगर उसका चक्रा ज्यादा हो गया तो भी यही होगा, मेरी लड़ाई हो जाती है यार, मेरे को खाना, मैं उस दिन खाती हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है, आई एम फाइटिंग, आई गेट सो क्रैम्पी, आई एम सो इरिटेटेड, यू नो, आई डिड दिस, आई शाउटेड ऑन माय बॉस, आई ब्रोक अप विद माय बॉयफ्रेंड। सो वो आपका चक्रा इम्बैलेंस है, सिर्फ पहनने से चक्रा बैलेंस नहीं होगा। Okay. और करना पड़ेगा उसके लिए, चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़े दिन अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा, क्लेंस करना पड़ेगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ, यू नो, डूइंग ऑल दिस वेल-बीइंग। Thank you. Okay, Chanpreet, you can take up your question quickly. मैम हाईलाइट कर दो जो आते हैं ना, आई कांट सी देम, सो अच्छा हाँ सर, आर यू देयर? She's put it up on. Sir, she's put it up on the chat. Okay. WhatsApp ग्रुप में जवाब दे देंगे, आई कांट सी इट है, एक्चुअली ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे चैट्स हैं। हाँ, तो आप प्लीज उसको कॉपी पेस्ट करके WhatsApp ग्रुप में डाल दो, we'll look after that there itself. Shipra, you can take up your question.
Yeah, Shipra, if sure. you Very good evening. Yes, yes. Very good evening to both of you and to all the participants. And thank you so much for the beautiful session that we held today. So, uh, my query is, मेरी Shipra, दो I can't can questions. you see. just turn on your video so that we can see you? Sir would like to see the participant and then address. I would have loved to, but I am working in the kitchen, all sweaty, so I really don't want to show my face at the moment. Will that be okay? I'm sorry. I'm really apologize for not No, showing that's up all at the right. That's moment. all right. But tomorrow we hope to see you. Definitely, Everybody I'll is dress. working I'll from be home, dressed you know. up. Okay, Correct. quickly, And sir. We'll yeah. go to the Be it question. kitchen, but still it's work from home. Yes, that's true. So I have got two questions, sir, for you. Firstly, like you are wearing few crystals in your right hand and few in your left hand. So is there any specific reason for wearing it left or right, or we can just switch whichever hand we feel like we can wear? एक हाथ भर गया था एक्चुअली, तो दूसरे में पहनना पड़ गया. But frankly, is it this reason only, or sometimes people say कि left is receiving and right is something? ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा No. कुछ नहीं है वो. For normal daily usage, doesn't matter what hand you are wearing. These myths are supposed to be broken. बस वो myth है, किसी ने बोल दिया. अच्छा, आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे. एक वेबसाइट पे लिखा है वो लेफ्ट में पहनना है, दूसरी वेबसाइट में लिखा है राइट में पहनना है. यूट्यूब पे देखोगे वो कहेंगे ये वाला तो लेफ्ट में पहनना है, ये वाला राइट में पहन सकते हो. करेक्ट. हाँ, और There is बोलते हैं no, मेल को राइट में पहनो, हाँ, फीमेल हो तो लेफ्ट में पहनो, there रिसेप्टिव हो is तो लेफ्ट में पहनो. no science about it. नो साइंस अबाउट इट. हार्ट आपका लेफ्ट में है ना, बट आपको है ये सुन के बहुत लोगों को पता नहीं है कि आपका हार्ट चक्र सेंटर में. हाँ जी, यस यस. हार्ट आपका लेफ्ट में है, बट चक्र इज इन द हार्ट सेंटर. चक्र इज इन द सेंटर. सो आप वो लेफ्ट में पहनोगे कि राइट में पहनोगे, डजंट मैटर. ओके, फेयर इनफ, गॉट द आंसर. माय सेकंड क्वेश्चन. पर्पस है कि आपका वहम नहीं करना है. श्योर. You know, these are very friendly, loving, motherly crystals. Correct. डरना नहीं है इनसे, पूछिए. Got it. Now my second question. So मैंने सबसे पहले ये white quartz पहना था, तो उसके बाद it was all okay, मतलब no more plus, no more minus, कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल चल रहा है. फिर मैंने पहना green aventurine मैंने पहली बार खरीद के पहना. In 2 days वो उसका जो thread था वो टूट गया. जी, यही वाला. उसके बाद वो टूट गया. उसके बाद मैंने दोबारा से ग्रीन एवेंचुरिन खरीदा, मैंने फिर पहना और दूसरा वाला भी टूट गया. एंड नाउ आई एम एंड दैट क्रिस्टल वाज रियली गिविंग मी अ ब्यूटीफुल एनर्जी. उसको पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. फिर मैंने एक लिया, वो ट्रिपल, आपको पता होगा, एक टाइगर्स आई एंड टर्मलिन, नहीं, दिस इज हेमेटाइट एंड वन मोर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. हाँ, ऑब्सीडियन. यस, टाइगर्स आई, हेमेटाइट एंड ब्लैक ऑब्सीडियन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में दिया था मुझे. तो मैंने ये पहना था. जब मैंने ये स्टार्टिंग में पहना तो मुझे बहुत ही ज्यादा खराब ड्रीम्स आ रहे थे. दिन में कोई फर्क नहीं था, बट रात को ड्रीम्स बहुत ही ज्यादा, मतलब नाइटमेयर्स टाइप ड्रीम्स आने लगे थे. उसके बाद मैंने इसको दोबारा से क्लेंस करके पहना, तो अभी मुझे कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्रिस्टल जो 2 बार टूट गया, पहले जो ड्रीम्स आ रहे थे, उसका क्या रीजन हो सकता है, और क्या ग्रीन एवेंचुरिन आई कैन स्टिल बाय एंड वेयर इट फॉर द थर्ड टाइम? देखो, बड़ा इसका वियर्ड आंसर जो लोग देते हैं ना, वो वियर्ड आंसर क्या देते हैं, वो आपको लिए बना ही नहीं जी. क्रिस्टल आपसे दूर जाना चाहता था इसलिए टूट गया. बार बार टूट रहा है जी, वो क्रिस्टल आपको सूट ही नहीं करता. वो छोड़ो जी, छोड़ो, नया ले लो. और अगर टूट जाए ना, उसको बनवाना मत, नया खरीद लेना, बस बेचना है ना दोबारा जी. अब वो टूटा एक्चुअली इसलिए था क्योंकि उसके अंदर का जो इलास्टिक है ना, वो घटिया था, थर्ड क्वालिटी का था जी. सिंपल बात है. ऐसे बहुत से ब्रेसलेट आपके पास आएंगे जो आपने इतना सा खींचा और वो वही शेप हो गई, उसकी शेप ही अजीब सी हो गई पहली दफा में, और वो जल्दी टूट गए. रीजन उसका ये घटिया था. ऐसी मैजिकल पावर्स मैंने आज तक वर्ल्ड में, आई हैव ट्रैवल्ड क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज, मैंने ऐसी मैजिकल पावर इन सारे क्रिस्टल्स में अलग अलग कंट्रीज में नहीं देखी कि वो ऐसा हो गया जादू की पहनते ही टूट गया, क्योंकि ना सूट नहीं कर रहा था, वो आपके पास रहना नहीं चाहता. So that is a myth. हाँ, वो बार बार टूट रहा है तो उसका तरीका है, आप उसको इलास्टिक की जगह आप उसको धागे में पुरो के ले लो, या आप खुद कर सकते हो, खुद कर दो, और you take it from the person who can give it to you in that thread also. We do it, we give it in the threads also. जो thread क्या होता है, जो गले की माला में thread होता है ना जी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड होता है, ये टूटता नहीं है, ये टूट जाएगा, ये नहीं टूटता है.
तो आप उसमें ले सकते हो। और आपको जब वो पहनकर खुद ही वंडरफुल एनर्जीज आ रही हैं और पर्पस ही इसका एनर्जी है, आपको जोश आ रहा है, आपको यू आर एबल टू कुक मोर एंड मोर टेस्टी फूड एंड यू नो यू आर डूइंग योर वर्क एंड कोर्स एंड एवरीथिंग, तो इट इज फॉर यू। ये क्रिस्टल्स का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं लोगों को क्रिस्टल कैसे देता हूँ, एक तो हो गया कंसल्टेशन करा रेकी से, एस्ट्रोलॉजी से, जो मर्जी पर्पस से कंसल्टेशन करके उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको बता दी, क्योंकि हर एक बंदा 10-12 नहीं पहन सकता, तो वैसा दे दिया। दूसरा, उसके बाद देयर आर सर्टेन पीपल हु आर लुकिंग एट माय एग्जीबिशन एट यू नो द टाइप ऑफ स्प्रेड दैट आई हैव डन इन द एग्जीबिशंस, तो वो कहते हैं कि मुझे ना ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, आप बताओ मैं कौन सा लूं। सो आई से द वन दैट इज अट्रैक्टिंग, द वन दैट नो आपको लेने की मन है, बस आपके लिए वही क्रिस्टल है। आप फिर मेरी रिकमेंडेशन भी आप ले लो वो जो आपको पसंद है। जब ये एक क्रिस्टल आपको अगर दिखता है, Yes, yes, it is visible. this is looking like a golden shiny रॉक। इसको ना हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड, आयरन पाइराइट फूल्स गोल्ड। ये इसका थोड़ा सा हल्का सा रॉ है, बट एक इससे भी ज्यादा रॉ फॉर्म आता है, वो ऐसे लगता है सोने का टुकड़ा है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा कजन है जो सॉलिटर का काम करता है, वो उनको मैं उनकी शॉप पे रखवाता हूँ, ऐसा लगता है गोल्ड रखा हुआ। तो कई लोगों को ये अट्रैक्ट करता है, तो मैं बोलता हूँ ये ले लो भाई आप। सो क्रिस्टल्स की सिंपल थ्योरी है, एक आपको जो अट्रैक्ट करे, आप जो आपको अट्रैक्ट करेगा 99% आपकी बॉडी में वो चक्रा को जरूरत होगा ही होगा। 99% ये होता है अगर आप चक्रा उसके बाद चेक करोगे। सो एक तरीका हो गया जो आपको अट्रैक्ट करता है, दूसरा तरीका हो गया जो आपको पर्पस के लिए चाहिए और जो आपको रेकमेंड कर दिया किसी ने, तीसरा तरीका है आपको लग रहा है कि यार मेरे को हार्मनी चाहिए रिलेशन, तो आपने पिंक कलर का ले लिया। और उसके बाद अगर आपको जो नाइटमेयर्स आ रहे थे, वो नाइटमेयर्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि जो टाइगर्स आई है, आई, टाइगर आई, इट इज फॉर ओपनिंग योर विजन, इट इज फॉर स्टॉपिंग बैड ड्रीम्स, इट इज फॉर स्टॉपिंग नेगेटिव थॉट्स। जो आप इंसान बहुत ज्यादा डरता है, घबराहट होती है, उसको लगता है हाय मैं तो, मेरी जॉब चली जाएगी, हाय मेरा बिजनेस चला जाएगा, हाय मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ देगा, मेरे बच्चा मुझे प्यार नहीं करता, मैं कुछ भी बनाती हूँ टेस्टी नहीं होता, मतलब उसको वहम है, उसको डर है कि बस इतना सा कुछ हुआ, आई विल लूज एवरीथिंग, आई विल बी ऑन द रोड्स। तो ये उस इंसान को पहनाया जाता है। अब आपके केस में क्या हुआ कि आपको उसका उल्टा हुआ, बिकॉज योर चक्रास, your chakra of your sacral root chakra was not balanced। और दूसरा उससे पहला पर्पस था आपका ये ब्रेसलेट प्रोग्रामिंग के बगैर पहना गया, आपने बस खरीदा और पहन लिया। नहीं सर, मैंने क्लेंजिंग और ये प्योरिफिकेशन और उसके बाद में चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग किया था, लेकिन आपने खुद करा था? खुद से किया था, हाँ जी, ऑफ कोर्स। हाँ, तो जब आपने खुद करा तब आपके चक्रास खुद ही इम्बैलेंस थे, तो वो उसमें नहीं गया। मैं चक्रा बैलेंसिंग भी बहुत मतलब करती हूँ, आई डू चक्रा हीलिंग अ लॉट बैठ करके, अभी इधर बीच नहीं कर पा रही थी, बट यू कैनॉट डू इट रेगुलरली। अभी मैंने चक्रा क्लेंजिंग के वर्ड्स में ये बोला था कि चक्रा क्लेंस करके उसको रिफिल करके उसको क्लोज करना है जी, सील करना है। अब आप हर थोड़े दिन में अगर आप बैठोगे चक्रा दोबारा चक्रा बैलेंसिंग, या आप ट्विन हार्ट चक्रा करोगे, या फॉरगिवनेस करोगे, या एवरीथिंग यू डू इज रिलेटेड टू चक्रा, कोई मेडिटेशन करो वो चक्रा से ऑटोमेटिक रिलेशन में आएगा ही आएगा। अगर आप बार बार करोगे तो वो हिलेगा ही तो सही, वो चक्रा बार बार इम्बैलेंस होगा, क्योंकि वो पहले भर चुका है, आपने सील कर दिया, फिर आप उसको क्लेंस कर रहे हो, उसको रिक्वायर्ड ही नहीं। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, वो आपका इम्बैलेंस हुआ है। आई एम नॉट सेइंग यू डिड समथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग आपका वो बैलेंसिंग की इम्बैलेंस की वजह से आपको, अब जब आपका बैलेंस हो गया, आज आपको वही अच्छा इफेक्ट दे रहा है ना, आपको अब नाइटमेयर नहीं आता, क्योंकि उसका पर्पस उल्टा है। उसका पर्पस ही नाइटमेयर से बचाने के लिए है, उसका पर्पस आपका दूर का ब्रॉडर विजन खोलने के लिए है। एनीबडी हु इज अगेंस्ट यू, जो आपको ब्रॉडर पिक्चर लाइफ में नहीं दिख रही कि वो आपका दोस्त लग रहा है, बट वो आपका दुश्मन है, वो आपका विजन खोलने के लिए। इट्स लाइक एन ईगल्स आई, बर्ड्स आई, कैट्स आई, टाइगर्स आई। बट दिस टाइम आल्सो आई प्रोग्राम्ड इट माय सेल्फ अगेन, दोबारा से क्लेंस किया। आपके चक्रा बैलेंस होंगे, इस दफा आपके चक्रा ओवर पावर्ड नहीं होगा, लो पावर में नहीं होगा। जो इसीलिए जब ये क्रिस्टल्स और वो जेमस्टोन्स किसी को दिए जाते हैं,
तो 99% ऑफ द टाइम जिसने उसको दिया है उसी से प्रोग्रामिंग करके लिया जाता है, या उसी को बोलते हैं भाई पूजा अभिमंत्रित करके आप ही दो, क्योंकि वो फिर भी अपने चक्रास को वो बैलेंस करके कर सकते हैं। इसको कोई जिसके बैलेंस नहीं है वो करेगा तो वो इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड और ओवर प्रोग्रामिंग इज रॉन्ग. ओवर चक्रा क्लेंजिंग, ओवर मेडिटेशन, ओवर ऑफ फॉरगिवनेस इज रॉन्ग. आपको खुद को फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम आएगा. तो जस्ट क्विकली वन मोर थिंग, आपने बोला सीलिंग, बीच में आपने बोला था सीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा का, तो सीलिंग के लिए महाबंधा इज सफिशिएंट? जस्ट अ क्विक क्वेश्चन. महाबंधा, महाबंधा, महाबंधा. हाँ, दैट इज फाइन, बट मतलब रेगुलर बार बार नहीं करने की जरूरत. जब आपका चक्रा अगर बैलेंस्ड है, आप उसको बार में दोबारा खाली कर रहे हो, दोबारा भर रहे हो, फिर सील कर रहे हो, वो नहीं, वो बैलेंस खराब हो जाए. अच्छा, ठीक है सर, गॉट इट. थैंक यू सो मच जी. So anybody who's shy I think till we now, have exceeded a lot of time. Yes. Sir, Sir, am I just audible? 1 minute. Can I just take one? Yes, you can Just obviously take, but am I audible, sir, clearly? Yeah. ये highlight करो ना मैम कौन है? I cannot see. No, sir, this is Nikki here. So I hope, am I audible? Yes. Okay. So we'll take a one last question. And others, if you have any questions, please put it down in the WhatsApp group, and we'll make sure that prior to tomorrow's session, you will receive all. आशुतोष का हाथ उठा हुआ है भाई. आशुतोष का क्वेश्चन. हाँ, आशुतोष, go ahead. Sir, I often look at a lot of songs and I was getting puzzled which one to pick one. So just it is simply said you need to look at which one you get attracted to. But I often find myself puzzled in so many good stones. So I was requiring you to suggest me from your end which stone will you like to suggest me, like which I go with. Generally, I stuck with the stress of financial issues. अब आशुतोष सारा कुछ आपको रिपीट करना पड़ेगा. आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा. मुझे बस ये समझ में आया कि आपको क्रिस्टल हाइड करने में you need to look at. Yeah, which will you like to suggest me? Any suggestion for me? Just a moment. I want. Yeah. 1 second, sir. Which? मैम हाईलाइट कर सकते हैं आशुतोष को आप? Which one will you like to suggest me? Yes, I'm just doing that. आशुतोष जी, मुझे जो समझ में आया, आप ये पूछ रहे हो कि आप क्रिस्टल्स में कंफ्यूज हो जाते हो. So just asking if I can guide you which crystal you should use. Yeah, if you can guide. कौन से crystals हैं? I couldn't decide which one I should buy and how, so that's why I joined this class. And if you can just give me some line of direction, which one I should pick or start. आप ना आशुतोष लिख लो. आप पहले amethyst, white quartz, and if you find them it is fine. If you don't find them, then you tell me in the WhatsApp group. आप मुझे बता सकते हैं. I will send, because अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो अब मिल नहीं रही है अवेलेबल. If you can guide me, like amethyst. I couldn't decide which one I should buy and how, so that's why I joined this class. आपको आवाज आ रही है या मैं आपको चैट में लिखूं? Just give me some line of direction. Which one I should pick or start with from. White quartz. आपको आवाज आ रही है? So this can have been financial. White quartz you have suggested me to buy. Amethyst, white quartz, black tourmaline. ये तीनों को आप ब्रेसलेट में ले लोगे तो बहुत बढ़िया है. अदरवाइज यू टेक इट इन एनी फॉर्म एंड ट्राई सर्चिंग ऑनलाइन. अभी डिलीवरी हो नहीं रहा है, कहीं से भी नहीं मिले तो यू कैन राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो वी कैन सेंड इट यू. ये तीनों क्रिस्टल आपके लिए मतलब आपका जो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द वीडियो इज दैट इट विल हेल्प यू इन बैलेंसिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. Amethyst will be good for your receiving good energies and balancing your crown chakras and able to receive more good energies from your head. और white quartz जो है वो शांति,
सुकून, एकदम कूल एंड काम, कंपोज रखने के लिए, हैप्पी, एकदम मजेदार पार्टी मोड, मतलब अच्छा खुशी वाले मोड में रखने के लिए। और ब्लैक टॉर्मलिन का पर्पस है कि जो भी नेगेटिविटी लोग आके आपके पास कह कू करते हैं ना, ये लॉकडाउन का जो फायदे की जगह कहीं पे वो भी हो रहा है कि ज्यादा बातें इधर उधर की नेगेटिविटी फैलती है टीवी से या इधर उधर से, वो उसको रोकेगा। ये कोर क्रिस्टल्स का पार्ट है, 3 क्रिस्टल्स, 7 to 10 जो कोर क्रिस्टल्स है उनका पार्ट है। So instead of going with a 7 chakra bracelet, something I should go with these to start with, right? 7 चक्रा ब्रेसलेट में ना ये जो स्टोन्स होते हैं बहुत कम होते हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करते, तो इट इज बेटर टू बाय सेपरेट देन अ 7 चक्रा। उसमें Okay, they are very small size. Okay. Yes. Sir, if you could make me the host again, I just reconnected. And now we'll just wind up the session, okay? If anybody is having any doubt, you can always drop it in the WhatsApp group. We will address that prior to tomorrow's session. And you will also receive the recording of the session. But before leaving, I want every one of you on the camera. Let's make this class memorable. All right, let's make this class memorable with Krishna sir. You know how to take a clip, iska wo screenshot na? I don't know. Yes. I'll just take a picture of everyone quickly. Everyone on the camera, please. Yes, can we have everyone can show their picture. Yeah, if you can write me like tomorrow I'm expecting everyone with the crystals. Quickly, everyone on the camera, all the people. Yes, on the go of 3. 1, 2. Everyone, smile on your faces. Isha, you're missing the smile. No, I can hear you very clear. 1, 2, and 3. सिर्फ गर्ल्स ने पोज दिया है, गाइस ने पोज कम दिया भाई। अच्छा, वापस से ले लेते हैं everyone, और again 1, 2 and 3. Thank you so much everyone. Thank you. Such a knowledgeable session. Looking forward for tomorrow. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. और WhatsApp ग्रुप पे आप लोग डालते रहिए अभी, anything you want to put in the WhatsApp group. Thank you. Amethyst and white cards you have. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Nikki. Thank you. Good night. Bye. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, sir. Bye. Good night. Thank you so much. Thank you so much, Krishna sir, for the wonderful session. It was great having you at BitClass platform, and hope we'll have a wonderful session tomorrow. I don't want any one of you to miss, right? So thank you so much everyone for joining. My question is still left, sir. I would like to ask you that question for tomorrow's session. Yes. You can also drop it in the WhatsApp group. You can drop it to me personally. I'll get that done with sir. Yeah. Sure. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Take care. Bye. Thank you, sir.